फाइनली फर्स्ट टाइम पे बोधे मोर लेट है 5 मिनट लाइव क्लास एनीवे तो जल्दी जल्दी टिके आपण माने जॉइन हे जांदो अच्छा So, hello everyone, I'm Sudipta Ma'am welcoming you all to Vedang Classes powered by Vedang Institute of Technology. So, tell me how are you everyone? केमती सब अच्छो? Preparation केमती तो माने कर चली छी? Before that, मते कहि दियो ऑडियो वीडियो सब क्लियर अछि तो? हमें स्टार्ट करि परिबा क्लास तो? हैप्पी बर्थडे मैम. केते थर मु जन्म हेबी की? केते थर मु जन्म हेबी की? हैप्पी बर्थडे रु स्टार्ट कलणी? हां? ओके. So, जिबा आज रही आपण मानकर पार्ट 2 सेशन सो जोटा के प्रीवियस संडे हमें कवर अप करथिले फर्स्ट सेशन दा 100 टा एमसीक्यूज आपण मानकु देइथिली बछा बछा एमसीक्यूज एंड आहुरी काहिले तो आहुरी गोटे सेशन भी नै आसे नेक्स्ट संडे देखिबा आपण मानकर व्यूज देखि के आ केमती कोन आपण माने भल पाइबा दोउचंती भल पाइबा देबा माने कोन मोटी कोन रील्स करछ तो माने भल पाइबा देबा तम मानक पाई ही करूछि हन नै तो माने जेति की लाइक एंड शेयर करबा सेमती आ ओके चलो So let now करके start करी देबा आज रो session. Before that, first thing, this is compulsory thing, okay? Screen टा कोनी छोटो छोटो मते लागु जे suddenly. Actually last class टा काली मोर थिला माने राती क्लास नथिला ना तो ऑफिस रो क्लास नै थिली बड़ स्क्रीन ने रूम स्क्रीन टा छोटो लागु आसो सो अगेन कहि रखु छी आपण मानकू जदि आपण माने स्पंदन पाई माने सीजीएल मेंस पाई कोर्स नेबा को चाहुचंदी ताहाले 1599 रे नै परिबे सहकारी बैच जूनियर असिस्टेंट पाई 1199 रे नै परिबे अनुशासन एसओ बैच 1999 रे नै परिबे एंड अग्निपथ ओडिसा पुलिस पाई आपण माने ओनली 399 रे नै परिबे apart from all these जदि आपण माने गोटे बैच रे सबु माने आपण माने प्रिपरेशन करूछंदी नो मैटर सीजीएल पाई आपण माने जूनियर असिस्टेंट पाई एएसओ पाई या फिर पुलिस एसआई पाई ताहाले गोटी बैच नै जिवे महापैक जोदिरा आपण मानकु सबुतिक कोर्स नॉट अबाउट दीज फोर कोर्सेस आगो को जेते भी कोर्स आसीबो 2 इयर्स चाहे आपण माने हम सहित कनेक्टेड ही रहिबे विथ दिस महापैक ओके एंड रहिला आपण मानकर बैच अछि सीजीएल मेंस पाई आपण मानकु तो ऑलरेडी कहि देछि 1999 दे के आपण माने नै पारि सॉरी 199 दे के आपण टेस्ट सीरीज स्किल टेस्ट हां टेस्ट सीरीज आपनकर 199 दे के आपण माने नै परिबे पेड क्लास रो स्ट्रक्चर आपनकर किछ एमती रहउची नंबर ऑफ क्लासेस 200 प्लस क्लासेस आपनको प्रोवाइड करा जाउची 3000 एमसीक्यूज पर सब्जेक्ट वाइज आपनको प्रोवाइड करा जाउची एज फॉर आज सेति के आपनकर एमसीक्यूज माने पॉसिबल हेई परिबो टेस्ट सीरीज ता सहित आपनको लाइव डिस्कशन भी फ्री दिया जाउची एंड जदि आपण माने मो कोड नोचंती एसपीजी 10 आपण माने एठी गोटे एक्स्ट्रा 10% रो डिस्काउंट पाई जिवे जो थिरे आपण मानकू केमती कोन प्रिपरेशन करिवे टाइम टेबल हाउ टू मेक नोट्स देखंदु आपण माने जदि इंटरेस्टेड हेबे आपण माने कहिबे मैम हमको एटा दरकार सेटा दरकार डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड दैट टू यू बट जदि आपण माने कहिबे आमे ही सर्वज्ञ आमे सब जानिछु आपण खाली हमको पढांतो आमे प्रिपरेशन करिवु तले मु आ कोन करि पारे कोन चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानक सामना रे सी कहला द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एठी आपण मान को ट्रिक मु कहिबी तो फर्स्ट मते कहि दियंतु जेतले वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कथा कहूची ताहाले आपण माने कहा सहित जिवे क्विक फर्स्ट कोन कहि देछि कोन किरे चलची एठी बर्थडे फटे मोर नुह कोन पे एंदी होचो आसो the vertical distribution of different species occupying different level is called ताको हमें कोन कहि परिबा कहिछि decomposition आसा गोटे गोटे करके एलिमिनेट करि दोछु decomposition कहूछि माने तमाने कोन जानछ ना जो प्रोसेस रे आपनकर डिकम्पोज हुंती दैट मींस आपनकर ऑर्गेनिक मैटर उडा कोन हुए ना ऑर्गेनिक मैटर आपनकर ब्रेक डाउन हुए कोन डिकम्पोज हुए डिग्रेड हुए ताको हमें कहि पारुछे दैट इज व्हाट ना डिकम्पोजिशन बट एठी जो कहबिली ट्रिक कहबी ता माने कोन ताकू डी को आपण माने कहिबे कारण वर्टिकल लाइन एटा को आपण माने जानिसंती हॉरिजॉन्टल लाइन एटा को आपण माने जानिसंती वर्टिकल लाइन जते बेले आपण को कुआ जाय गोटे स्ट्रेट लाइन पका आपण माने कोन ना स्ट्रेट लाइन ता को एम्ति पकान तो स्ट्रेट लाइन नो वर्टिकल दैट मींस द स्ट्रेट रू स्ट्रैटिफिकेशन एंड व्हाट डज इट मीन बाय द स्ट्रैटिफिकेशन कोन पे कहूची बिकॉज़ इट रेफर्स टू द वर्टिकल कोन लेयरिंग ऑफ द हैबिटेट एनी हैबिटेट तार लेयरिंग को हमें
रखुचे से वर्टिकली आपनकर कोन जाउची वर्टिकली हमें तार माने हैबिटेट को कंसीडर करूचे सच एज आपनकर केमिति हे गला ना ट्रीज हे गला गोटे जदी गच्छ को हमें कंसीडर करूचे ताहाली आपनकर कोथरे जीव ना वर्टिकल लाइन जीव जदी कोन से श्रब हैला ट्रीज हैला श्रब हैला और हमें एनी काइंड ऑफ आपनकर हर्ब्स को हमें ऑक्युपाई करूचे डिफरेंट हाइट ऑफ द फॉरेस्ट रे ताहाल हमें ताको कंसीडर करूचे विथ द ग्रुप ऑफ कोन स्ट्रैटिफिकेशन क्लियर है तकी जिंस अच्छा एठा गोटे वर्ड अछि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जदी आपन को क्वेश्चन ने पछारिला व्हाट डज इट मीन बाय द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आईडिया किछि अछि किछि आईडिया अछि जो माने नॉन साइंस रो बैकग्राउंड आपन मन को डायरेक्ट पछारछि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जदी पछारि देला यार डेफिनेशन अकॉर्डिंग आपन को पछाला व्हाट डज इट मीन बाय आपन कहि परिबे रेफर करूछि ना इंक्रीज कोन कहिछि ना इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिन as it passes between different levels जेते बेले हमें पिरामिड रे जाउछे जेते बेले डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को हमें जाउछे जेते बेले आपनकर टॉक्सिन पास करछि एंड कहलो मते जो टॉक्सिन त मानु कहली ए जो टॉक्सिन आपनकर पास करबो डिफरेंट लेवल ले व्हाट डज इट मीन बाय द टॉक्सिन ना टॉक्सिन गोटे हार्मफुल आपनकर कोन ना सब्सटेंसेस हे जो जोटा कि आपनकर इजीली कोन ना ब्रेक डाउन होबो नाही सपोज आपन माने कहि परिबे ब्रेक डाउन होबोनी आपनकर मेटाबोलाइज्ड होबोनी इवन हमें कहि परिबे जोटा कि ऑर्गेनिज्म रो बॉडी रु आपनकर एक्सक्रीट होउची जोटा कि इजीली डिकम्पोज होउनी मेटाबोलाइज होउनी ताकू हमें कहि परिबे दोज आर द टॉक्सिन्स ओके जोटा इजीली आपनकर कोन होबोनी ना डाउनग्रेड होबोनी एतिक जिंस बुझी परलो एंड सेम थिंग आपन को कहूची एटी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ता सहित आ गुटे वर्ड आपन को पचारिबो दैट इज द बायो एक्युमुलेशन मन रखो या सहित आपन को गुटे वर्ड पचारिबो बायो accumulation and आगो को क्वेश्चन में भी थिबो हम डिस्कस करिबा बट स्टार्टिंग रो मु त मानु कहि दउची जदी आपन को हां एग्जांपल आपन माने टीटीटी को नै परिबे वेरी गुड यस जदी आपन को बायो एक्युमुलेशन पचारची ताहाल हमें ताको कोन रिलेट करियो मते कहि दियो ना ये रेफर करिवो काहा को ना टॉक्सिन ऑफ बिल्ड अप को किंतु कोन ना सिंगल ऑर्गेनिज्म को ऑफ द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ स्पैन माने एथि आपन को कोन कहूची बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ने लेयर किछि मीन्स आपनकर जते ट्रॉपिक लेवल को लेयर को आपनकर ग्रोथ हबो ग्रोन हबो सेठी हमें कहबा दैट इज द बायो मैग्निफिकेशन जेते बेले बायो एक्युमुलेशन कहूची गोटिए पर्टिकुलर हैबिटेट हैला जे कोन से माने जदी हमें गोटिए पर्टिकुलर हैबिट को चूज करूचे ताले तार टोटल लाइफ स्पैन भितरे से केति की माने गोटे सिंगल ऑर्गेनिज्म केति की टॉक्सिन क्रिएट करूची टॉक्सिन को डिग्रेड करूची तो एटा को आपनकर बायो एक्युमुलेशन कहजिवो एति की जिंस क्लियर बुझी परलो बाकी रहला आपनकर को ओव्युलेशन तो जो सॉरी को इवोल्यूशन तो को इवोल्यूशन कोन कहची ना एटा ओकर हबो जेते बेले दीटा और दीटा रु अधिक स्पीशीज रेसिप्रोकली गोटिए जगह रे रहिबे गोटिए इकोसिस्टम भितरे रहिबे एंड गोटे इकोलॉजिकल इंटरैक्शन करिवे गोटे जगह रे रहिबे एंड तांको दिजन को भितरे जो बिहेवियरल चेंज हबो ताकू हमें कहूचे दैट इज द को इवोल्यूशन जोटा इवोल्यूशनरी चेंज हबो ताकू हमें कहबा दैट इज द को इवोल्यूशन जेते बेले दीटा और दीटा रो अधिक स्पीशीज गोटे इकोसिस्टम गोटे इकोलॉजिकल इंटरैक्शन क्रिएट करिवे एतिकी जिंस बुझलो चारटा जागा भितरे आई होप क्लियर किछि डाउट रहिबनी साइंस को डर नाही ओके चलो next vertical distribution of different species occupying the different level called the stratification this is common in forest where different plant species animals and insect occupy different vertical layers from the forest floor to the canopy each layer hosts the different species एतिकी क्लियर हे गला नेक्स्ट क्वेश्चन चलो लुक्का काई एमती हो जो आसा out of the following four कोन पचारछि पुन थरे देखो ना out of the following four there sorry three are ecological pyramids thus forming a group which one does not belong to this group गोटे आपनकर से ग्रुप बिलोंग करूनी बाकी सब आपनकर जाउची ताहाले हम आउट एंड आउट कर देबा जदी आपन माने जानि पारु नाहंती स्टिल देखो जते बेले कहूची पिरामिड ऑफ एनर्जी जते बेले आपन कहूची पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर तीनटा जक आपनकर इक्विवेलेंट काहे की होबो कारण पिरामिड ऑफ कल्चर आपण माने केबे सुनि नथिबे व्हाट डज इट मीन बाय ना बिकॉज़ इट इज अ सोशियोलॉजिकल एंड हमें कहि परिबा कल्चर माने कोन कल्चर माने आपनकर एंथ्रोपोलॉजिकल मनीष ही आपनकर कल्चरली हेरिटेज है कि अछि कल्चरल सहित की ह्यूमन एसोसिएटेड तो ह्यूमन को हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहि परिबा तो एंथ्रोपोलॉजिकली कहि परिबा आपनकर कोन सोशियोलॉजिकली कहि परिबा द वर्ड कोन पिरामिड ऑफ कल्चर इज एसोसिएटेड दिस इज द कांसेप्ट ऑफ कोन एंथ्रोपोलॉजिकल क्लियर एटा आपनकर रिकॉग्नाइज होनी इकोलॉजिकल पिरामिड अंडर आपनकर के जीवो ना एनर्जी जीवो पिरामिड ऑफ बायोमास जीवो पिरामिड ऑफ नंबर जीवो एतिकी जिंस क्लियर काम खत्म चलो नेक्स्ट क्वेश्चन so pyramid of energy shows the flows of energy each trophic level in an ecosystem
it always upright because energy decreases as it moves off the level. जते आमे ऊपर को जाउछ आपण माने जानि सथि 10% लॉ जदि आपनकर 10000 एनर्जी अछि ऊपर को गले हमर 1000 हे जिवो then 100 हे जिवो then 10 हे जिवो and so on 10% आपनकर एनर्जी लॉस हुए each level को आमे गला पर क्लियर अति कि जिंस नेक्स्ट चलंतु मते कहि दियु who conducted the study on the topic dynamic aspect of ecology in the year 1942 क्वेश्चन आपन को सिंपली पचारि छी कोन ना हमको पचारि छी कि इकोलॉजी जो आपनकर एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी पचाला द टॉपिक डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी बुक आपनकर ता ऊपर स्टडी किए करथिले व्हिच साइंटिस्ट को साइंटिस्ट को हमें कंसीडर करिबा रोहित बाबू ए क्लास का एग्जैक्टली सीजीएल मेंस एंड एसओ को फोकस करी कि ही रेस्ट आपनकर जेते एग्जामिनेशन रे आपनकर क्लाइमेट चेंज पडुची एनवायरनमेंट ऊपर क्वेश्चन पडुची दिस क्लास इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर दोस ओके आसो कौन कहिची ना कहा को हम कहबा डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी को स्टडी किए करथले 1948 रे ना आपनकर करथिले रेमंड लिंडमैन कहां को हम रिलेट करछे ना रेमंड लिंडमैन को हम रिलेट करूछे क्लियर करेक्टली आपनकर बाकी रिसेल कैप्सन एंको आपण मान जानसंती ये आपनकर कोन करथिले ना साइलेंट स्प्रिंग लॉन्च करथिले एनवायरनमेंटल मूवमेंट साइलेंट स्प्रिंग या पर आपनकर स्टडी करिथिले ओके ओके क्लियर क्लेमेंस 1942 हाँ 1942 तो 1942 मैम 1942 ना कौन पुनी 1942 ही आसो बाकी अलेक्जेंडर हम्बोल्ट गाइस मन रखि दंतु बोटानिकल आपनकर बोटानिकल स्टडी उडे करथिले अलेक्जेंडर हम्बोल्ट आपनकर करथिले बोटानिकल जियोग्राफी वर्क जदि आपनकर ब्लूप्रिंट रखिथिले काहा कहलो फाउंडेशन ऑफ आपनकर बायोजियोग्राफी को नहीं कि आपण जति के बोटानिकल प्लांट सब आपनकर अछंती डिफरेंट न्यू प्लांट क्रिएट होसंती दीटा प्लांट रो स्पेसीज को नहीं कि हमें न्यू प्लांट गोटे जनरेट करछे तो सेही जिंसटा आपनकर केमिति होउची तो एई जेटा को बायोजियोग्राफी रे स्टडी करिथिले कि अलेक्जेंडर हम्बोल्ट तो जानि था जस्ट फॉर योर नॉलेज आसो नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहि दियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कंपोनेंट कहा को हमें अबायोटिक कंपोनेंट कहबा ऑर्गेनिक करि चलो कहा को कहबा ना जहा पाखरे हमर कोन से लाइफ नथिबो जे हमको लाइफ किंतु प्रोवाइड करथुवा जहाटी निजर लाइफ नथिबो किंतु विदाउट दैट वी कैन नॉट सर्वाइव ताकू हम रिलेट करै परिबा दैट मींस हम इजीली वाटर को रिलेट करिया फॉर जे इटसेल्फ आपनकर लाइफ अछि फिश त आपनकर जानछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट एटी वेजिटेशन भी आपण माने बहुत टाइप रे कंफ्यूज होतबे व्हाई वी कैन नॉट रिलेट विथ द वेजिटेशन कारण वेजिटेशन आपण माने प्लांट पळेबे प्लांट को आपनकर फोटोसिंथेसिस करूची माने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करूची फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे तो ऑर्गेनिक एनर्जी करूची माने आपनकर जनरेट करूची ऑर्गेनिक एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सो यू कैन नॉट go with that चलो next मते कहि दियंतु so what are these abiotic component that constitute in the environment abiotic components are the non living things एरा कोन पढेबी क्लास 3 4 पाठ चलो next मते कहि दियो what is the correct sequence of zones in a pond correct sequence आपनकर कोन रहिबो quick तमानकर सकाळ निद भांगी जाय छी रविवार टारे आखी मोर खोली गला विश्वास करो भाबिले तमाने के आसीबनी हस कुआ गधस्थल एटी गोटे मजा पाठ पढ़िबा को मते फर्स्ट कहि दियो कोन हबो राइट आंसर क्विक हां गायत्री मु साइड नहले तमु तो देखा जीवनी ना बाकी समस्ती को देखा जीवो एक्सेप्ट यू मु साइड नहले तमु किछ देखा जीवो साइड हे कि भी बहुत ठीक आंसर दोजो तो कहू ना आसो right answer कौन है what is the correct sequence of zones in a pond ecosystem from bottom to top एटी कौन कहछि ना bottom ru top को जदि हमें जाउछे ता माने कहा को रिलेट करेबो ए जो ना गुडा तम माने को पई नुवा अछि ना गुडा नुवा बाकी सब तम माने रेट कर देबो जो माने दोउछ ना म जानछि तुम गूगल सर्च कर दोउछ इट्स ओके मु तम माने को बुझे दोछि कांसेप्ट सो दैट आपण माने आगु को जाई के गूगल सर्च करिवेनी कोथि पई कहउछि कारण जो हाइपोलिमिन आपनकर गोटे करी कहछि जो व्हाट इज द हाइपोलिमिनियम एंड आपनकर थर्मोक्लाइन एंड आपनकर एप्लिमिनियम ओके या माने कोन फर्स्ट थिंग एटा होछि आपनकर सरफेस दिस वन इज योर सरफेस ओके एंड आपनकर तळे रहिला कोन ना याडू को आपण जति जिबे एटा आपनकर सपोज कोन ना पॉन्ड रहिला एटा आपनकर पॉन्ड और आपण मानकर कोन ना लेक रो बेड रहिला एपटे ओके तो एठी जो सरफेस हमें क्रिएट करूछे ना फास्ट आपनकर कोन आसिला ना एठी आसिला आपनकर एप्लिनेशन कोन हइला ना
कारण आपण कोन कहछि ना सीक्वेंस जोन्स आपनकर व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस जोन्स इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम. अ पॉन्ड इकोसिस्टम बॉटम टू टॉप कहछि. बॉटम टू टॉप माने आपनकर सरफेस एट रहला माने मोटे की कहछि सरफेस रो आपण माने ऊपर को आसुती ये आडू आसिले आपण माने इकोसिस्टम आडू जिवे माने लेक आडू जिवे. ओके तो फास्ट आपनकर आसी जिवो कोन ना एप्लिमिनियन. ए जो एप्लिमिनियन आपन को कहिछि एटा आपनकर आगा आसीबो. एप्लिमिनियन कोन पे कहिछि ना ये आपनकर वार्म कंडीशन आपण माने जरे पोखरी भितर को पसुचंती वार्म आपनकर आसीबो जते बेले फास्ट आपण माने शीत दिन हो खरा दिन हो देखिथिए शीत दिन प्राय देखिथिए पोखरी भितर को पसिले आपनकर तळ गुडा प्राय उसुम उसुम आपन को लागे लागे ना नहीं तो काहे की ना आपनकर तळ सरफेस आपनकर वार्म थाए एंड आपनकर कोन सनलाइट कम पड़े सेठी की एंड हाई ऑक्सीजन आपनकर थाए. दिस इज द प्रोसेस ऑफ एप्लिमिनियन. ओके जते बेले आपण थर्मोक्लाइन कहउचे आपनकर रैपिडली टेंपरेचर ड्रॉप हे चले. थर्मोक्लाइन ने आपनकर धीरे धीरे कोन हुए ना रैपिडली टेंपरेचर ड्रॉप हुए. देन आमे जदी कहउचे दैट इज द हाइपोमिनियन ताको आमे कोन कहउचे ना दैट इज वेरी कोल्ड डार्क एंड लो इन ऑक्सीजन जोटा कि आपनकर कोठी पाइबा ना लेक बेड रो टुवर्ड्स द सरफेस जदी आमे जाउचे ए सब को धीरे धीरे आमे पाइ. क्लियर क्लियर वार्म हे जाय. हां चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मते को. सो राइट आंसर आपनकर कोन हे गला थर्मोक्लाइन एप्लिमिनियन इज द करेक्ट सीक्वेंस. व्हाट इज दिस ऑप्शन आर मु तमन को पूरा इमेज सहित बुझाई देछि. क्लियर नेक्स्ट चलंतु. फर्स्ट आपनकर एप्लिमिनियन रहिला टॉप लेयर किंतु हम तळु को जाउछि जते बेले थर्मोक्लाइन आपनकर मझे रहिला ऊपर फॉर एपी ऊपर. ओके मन होइबो तापर आपनकर हाइपोलिमिनियन रहि गेला तळ. क्लियर नेक्स्ट चलो मते कहि दे सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. मते कहि दे या अकॉर्डिंग आपनकर को स्टेटमेंट ता राइट हे जिवो. ओके तो पढि चलो. फर्स्ट कोन कहि ना एन ओपन इकोसिस्टम एक्सचेंज करे बोथ द एनर्जी एंड मैटर विथ इट्स सराउंडिंग. गोटे ओपन इकोसिस्टम ऑलवेज जेहेतु से ओपन अछि ताले सराउंडिंग रे कहा सहित भी से कोन ना तार एक्सचेंज करि परिबो बोथ द एनर्जी मैटर विथ द सराउंडिंग्स. बिकॉज़ हमें जानि छे नेचुरल इकोसिस्टम कांस्टेंटली आपनकर कोन करे ना गेन करे एनर्जी फ्रॉम द sunlight and exchange करे nutrient with the adjacent ecosystem जहां भी तरह थिबो. दैट मींस एटा अपन का राइट हेला तो को पढिबा कि a closed ecosystem only exchange matter. एटा तो बिल्कुल हबरी जदी ये राइट ताहले डेफिनेटली रॉन्ग. a closed ecosystem क्लोज कथा आसिला कोडी closed ecosystem exchange both energy and matter with its surrounding बिल्कुल हबनी. an open ecosystem only exchange energy with its surrounding not matter. सबु करे भाई सबु करे हैला. क्लियर है कि जिंस. चलो नेक्स्ट. so open ecosystem has following features. it exchanges both energy and matter with its surrounding. Interact करे freely with its surroundings also. Example plant and ecosystem. Next question mate कहि what is the basic requirement for the functioning and maintenance of an ecosystem. कौन हबा right answer quick. पाठ पढियो का आछो जदी चुपचाप पाठ पढो. आज जदी त माने डिस्टर्ब कलो बुझिबी तम कथा रो. ओपन इकोसिस्टम रे यार आंसर दे दियो. साइड हे जाउची गायत्री देखाउची तो गायत्री visible होउची जल्दी को कहछि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इकोसिस्टम. एबे कोन हबो यार राइट आंसर क्विक. सोलर आपन कर हबो इनपुट कहार हबो इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी सहित जिबा व्हाई बिकॉज़ वी नो सनलाइट ड्राइव करूची फोटोसिंथेसिस को एंड प्रोवाइड करूची कोन ना फाउंडेशनल एनर्जी हमकु दोउची एंड फ्यूल दोउची जो माने फाउंडेशनल एनर्जी जोटा दोउची दैट फ्यूल्स द ट्रॉपिक लेवल. ट्रॉपिक लेवल को आपन कर फ्यूल अप करूची कि द एनर्जी दैट इज we are derived from the sunlight. तो definitely हम relate करिबा. organisms हला soil texture हला micro organisms यांका से relate करिबा. organisms also crucial but हमें जानचे they are the living beings and cannot survive or the function as an ecosystem without an external source of energy. जोटा कि आपन कर तो external source of energy or the power of life, without that it cannot survive. Okay next चलो. so मते कहि दियंतु which of the following ecologist is famous for studying the life of plants in the India dunes in 1896. कौन होगा राइट आंसर यार क्विक. आसो सूर्य सकल शक्तिर आधार. हाँ हाँ सेति लागि त माने सब उठी जाय छबा सूर्य उदय हैला बोली नहले कोन त माने सोई थांत माने उठी थांत. सूर्य उदय हेले त माने उठी पडु छबा. केते जण सूर्य उदय हेबा पूर्व उठु छ मते कहलो को who study which of the following ecologists famous for the studying the life of plant in the Indian dunes of in 1896. एंको हम रिलेट काहा को सदा करे परिबा because his pioneering 1896 the field work they are established the ecological succession and the central what option आपनकर 1896 होते जिबा ना अल्डो लियोपार्ड तो हेबेनी. अच्छा कॉल्स अच्छा आसो हेनरी चैंडलर
काहा को हमें कहूँ ना चैंडलर को सहित आपण मा रिलेट करि परिबे इंडियन डून्स सहित काहा को चंदा मामा को आपण मा रिलेट करि देबे काहा सहित ना इंडिया सहित इंडिया रे हमें समस्त कोन सब अलगा तो किए लूनर कहूची किए मून कहूची हमें तो कहूची कोन चंदा मामा ओके तो आपनकर चैंडलर सहित इंडियन डून्स को आपण माने रिलेट करई देबे क्लियर क्लियर अच्छा उठिकी भी तमे सोई पड़ती विक्रम आ उठ कौन पाई आस नेक्स्ट मते कोंदु सो हेनरी चैंडलर काउल्स इज फेमस फॉर स्टडीइंग द लाइफ ऑफ द प्लांट्स इन इंडियन डून्स इन 1896 नेक्स्ट मते कहि दियंतु हाउ इज द स्टैंडिंग क्रॉप मेजर्ड इन अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल स्टैंडिंग क्रॉप आपनकर कोन कहूची आस जेतेबेले आपन को कहूची the standing crop in a particular tropic level that what does it mean by that means हमें कहि परिबा कि the standing crop quantifies the total mass of living organisms present in a given specific area or a given area in a specific time जेतेबेले गोटे given area कहि दोची specific time कहि दोची particular organism कथा कहि दोची माने living organisms and their mass कथा कहूची that means that is the biomass केते जणा as the biomass yes madhavda aso so kon hochi right answer na biomass hoite jauchi energy pyramid apanakar kon this is a structural apanakar kon kochi between the levels not direct unit apanakar inu ye dita level bhitar apanakar pyramid apanakar total productivity show karuchi ki total productivity rate apanakar organic matter generate kare hona nai over a duration next chalo so right answer gala apanakar sure dekhi diyo ethi apanakar kon hochi upright pyramid apanakar jemti कहिथिली एटी 10% apanakar loss he जाउची okay that the standing crop measured in a particular tropic level is a biomass it is usually expressed as a weight for unit area it is the total mass of living organisms in a given area next mane कहि दियंतु कोन कहूची ना in 1866 who proposed a new term कोन कहूची ना ecology which defined the study of relationship of organisms with their environment ता माने ए जो ecology माने कोन कथा कहिची ना गोटे पर्टिकुलर लिविंग कथा कहिची एंड तार इकोसिस्टम सहित तार कोन बिहेवियरल डिफरेंस रहउची ताकू स्टडी करा जाईची ए इकोलॉजी रे ताले जो इकोलॉजी रहिला याकू कॉइन किए करिसंदी आपन को पचाउची फर्स्ट थिंग देखो इंपोर्टेंट रहउची आपनकर जानिबा दरकार पचारे जेबा कि द व्हाट इज द ना द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप of organisms with their environment ताकू हमर कोन कहसे डिफरेंट आपको दे देथिबो जेमते कि आपनकर इकोलॉजी अछि देन आपनको एंटिमोलॉजी देथिबो आपनको साइटोलॉजी देथिबो आपनको व्हाटएवर जहां भी देथिबो आपनको रिलेट करेबार कोन अछि ना इकोलॉजी सहित केमती कोन रिलेट करेबो त माने गुटी के भाबी कहि दियो इकोलॉजी सहित रिलेशनशिप आसुची गोटे ऑर्गेनिजम्स को तार एनवायरनमेंट मोइली गोटे ऑर्गेनिजम्स मोर फैमिली हैला मोर एनवायरनमेंट क्लियर बुझी पाछो तो मोर ऑर्गेनिजम मोर फैमिली हैला या फिर मोर रूम हैला मोर एनवायरनमेंट सपोज हमें हस्बैंड एंड वाइफ हमें रहउची गोटे रूम भीतर दिस आर द एनवायरनमेंट हमें हेले ऑर्गेनिजम्स होना नहीं त हम भीतर रिलेशन हेले मु ताम कोन डाकिबी ओए सुनुचो तो इकोलॉजी सहित रिलेट करेबा दैट इज द एनवायरनमेंट एंड तार रिलेशनशिप क्लियर नेक्स्ट चलो किए करिथिले एटा इंपोर्टेंट ताको मन रखम दैट इज द अर्नेस्ट हाइकेल को सहित रिलेट करे ओके ऑप्शन सी 1866 Ernest Haeckel proposed a new term ecology it defines the study of the relationship of organisms with their environment Haeckel's work laid a foundation for the field of ecology को define कले कारण starting term ecology start हैला by coin the word ecology clear next चलंतु मते कहतो in 1972 coined the term pyramid of numbers again आसा पुनी कारण ए क्वेश्चन उडा आपन को रिपीटेडली एग्जाम रे आसुची ठीक अछि हाँ तमे माने हेटी कहउछ मु ए कहे आस मते को in 1972 coined the term pyramid of numbers which represents the total number of individuals जोटा को हमें population बोली कहउचे at each tropic level ताहाले हमें ताको डिफाइन करिबा केमिति क्विक जल्दी इकोलॉजी टर्म ता जणे हैकेल देथिले हैक करिके देथिले ना कि आस तो एबे पचारची हु coined the term pyramid of numbers ए जो गोटे गोटे वर्ड की कॉइन करथिले these are very crucial for your examination सब गुडा घोसी की पानी कर दियो हैला जदी हमको कहूची एठी इकोलॉजिकल पिरामिड कथा पचारची माने पिरामिड ऑफ नंबर्स कथा पचारची हमें कहां से जिबा ना आपनकर चार्ल्स इल्टन करिथिले पिरामिड्स ऑफ नंबर ओके मने रहइबो इल्टन यस इल्टन करिथिले ताहाले मते कहतलो एठी जो टेंसले आपनकर कोन करथिले ऑलरेडी हमें माने रिलेट करे छे कहा को इकोसिस्टम
इकोसिस्टम इन द ईयर 1935 आपनकर ट्रांसलेट किए ट्रांसले आपनकर करथिले इकोसिस्टम सहित आपण माने रिलेट करि परिबे ट्रांसलेंग सहित हैकेल को सहित एबे कहली त मानकर कोन हैकेल को सहित रिलेट करि परिबो इकोलॉजी हैला इकोलॉजी इकोलॉजी सहित बाकी रहिला आपनकर ओडम ओडम आपनकर कोन करथे डेफिनेटली आपनकर कोन करथिबे ओडम को हमें कंसीडर करूचे ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन करथिले पॉपुलराइज्ड फॉर द इकोसिस्टम लेवल स्टडीज को डिफरेंट लेयर ऑफ इकोसिस्टम को स्टडी करथिले हेंस ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ कौन मॉडर्न इकोलॉजी जदि आपन को मॉडर्न इकोलॉजी कथा कुआ गला फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी देन वी कैन relate it with the odom clear है कि जिंसा modern ecology very good morning रजत बाबू रजत तो yes आसा next मते कहि दियंतु small marine dwelling organisms okay small marine dwelling organisms phytoplankton are related to which tropic level in the food web में हमें जे phytoplankton ना कोन किछि गोटे रोल आपनकर थिबो त माने एटु आपनकर जो टाइप्स ऑफ आपन कहछि प्राइमरी प्रोड्यूसर या फिर आपन को डिकम्पोजर सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर त कहा भीतर हमें कहबा जतबेले फाइटोप्लैंक्टन्स आपन को कहउछि दिस ऑप्शन आपन मन जानि परथु एल्जी क्राइटेरिया को बुझौछि दैट मींस बिकॉज़ दीस आर वेरी माइक्रोस्कोपिक मराइन ऑर्गेनिजम्स हमें कहउछि जो माने केमिति बनसंती ना सनलाइट आसिला परे परफॉर्म करूछंती फोटोसिंथेसिस ता माने कोन आसंती ना दीस आर द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कोन एनर्जी हमें कहि परिबा ता माने हमें कहि परिबा कि ये प्रोड्यूस करूछंती कारण फोटोसिंथेसिस होउची थ्रू द सनलाइट जदी हेई पारुछ माने प्रोड्यूसर थिबे ये डेफिनेटली आपनकर कंज्यूमर ग्रुप रे जिबेनी कि डिकम्पोजर ग्रुप रे जिबेनी एति कि जिंसा बुझी पारुछ ना किछि डाउट होउची म देखो फाइटो एंड जूथ एंड स्मॉल फिश ओके तो डिकम्पोजर्स कहउची माने कोन ये आपनकर कोथि जिबे भारी ये आपनकर हेटेरोट्रॉफिक रे पळेबे हेटेरोट्रॉफिक रे आपनकर को माने पळेबे ना डिकम्पोजर्स माने पळेबे एंड व्हाट डज इट मीन बाय द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स माने आपनकर बैक्टीरिया हे गला फंजी हे गला जो माने ब्रेक डाउन करंती ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मैटर को हमें ताको कंसीडर करबा दे आर द डिकम्पोजर्स क्लियर एति कि जिंसा चलंतु नेक्स्ट मते कहि दियंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा को हमें गुड एग्जांपल देबा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम रो मते की कहि परिबा क्विक थ्योरी सहित एमसीक्यूज आउ पेड क्लास रे कोन करबा ताले पेड क्लास रे कोन करबा एठी तो सब थ्योरी कहिबे एठी तो एमसीक्यूज करबे को जदि तमाने साइंस बैकग्राउंड रो पिला ताहाले धड़ासकिना कैच करिवो जदि आपण माने नॉन साइंस रो बैकग्राउंड रो पिला ताहाले मु जति की कहूची भी तमाने बुझी परिबो मु जति की रिलेट करी की कहूची भी तमाने बुझी परिबो हैला आ पूरा बेस रु स्टार्ट करिया पई YouTube सेशन इज नॉट फॉर दैट बच्चा कोन करबा आसा मते को व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ऑलरेडी मु कहि छि त माने जदि स्टार्टिंग रो सब क्लास करू माने करू थांतो ताहाले इकोसिस्टम कोन बुझी थांतो एंड इकोसिस्टम कहले तो माने जानि पाथंतो व्हाट इज आर्टिफिशियल व्हाट इज नेचुरल इकोसिस्टम आर्टिफिशियल इज नथिंग बट द एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम दैट माने कोन जोटा आपनकर मनिष निजे क्रिएट करि छि बुझी पाछो ना नै मनिष क्रिएट करछि कोन पॉन्ड तो मनिष जाकि तयारी करूनी लेक करूनी फोर्स करूनी पॉन्ड कोनोसी गोटे रेयर केसेस रे आपनकर एबे जेंति मत्स्य चाष होउछि ता पई करूछि किंतु गार्डन तो आपनकर मनिष निजे तयारी करछि ना that was also कोन actively maintained by the human being human intervention आपनकर होउछि बुझी पाछो तो सेथि पई हमें रिलेट करूछि एमिति कोन लाभ हबो देखिले कि मु आ कोन कहि परिबी तमे माने जदि बेनिफिट खोजियो सब कथा रे मु आ कोन खोजि परिबी तमे माने कहिलो बोली मु क्लास आनिल जो त मानकर बेनिफिट नाही देन आपण मानकर इच्छा मु किछ त करि परिबिनी हैला आसो मते कोन गार्डन इज एन एग्जांपल ऑफ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इट इन्वॉल्व करूछंती कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स मेकिंग इट अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम क्लियर नेक्स्ट मते कोन कहछि को ना एट व्हिच लेवल ऑफ द फूड चेन आर एंड एग्जाम तो माने मासे अछि तो माने भाबु कोन स्टार्टिंग रो तो माने को एबीसीडी पढैले तो माने बुझी परिबो केबे भी बुझी परिबो जो स्टूडेंट माने पढिबा को आछिचंती से माने किछि माने होमवर्क करि के आसंती कि हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करियो बोली आ जो माने पूरा न्यू से माने मु एठी बाटी की पूरा पीआई देले भी तो माने बुझी परिबो ना दिस इज द रियल थिंग खराब लागिले भी सब आसो मते कोन एट व्हिच लेवल ऑफ द पॉन्ड चेन आर मिलीपेड्स आपनकर स्प्रिंगटेल्स वुडलीस आपनकर डंग फ्लाइज and the snail included that obtain the nutrition from dead and decaying plant or animals ता माने आपन को इठी कोन कहूछ
कौन कहिछि एटी कहिछि बिकॉज दिस ऑर्गेनिजम्स आर स्पेसिफिकली कोथरे आसंदी ना डेट्रिवोर्स रे आसंदी एंड व्हाट डू यू माइंड इट डिकेइंग आसीछि डिके कथा आसीछि माने हमें रिलेट करबा काहाकू ना डेट्रिवोर्स मानक कथा रिलेट करबा ठीक अछि एंड डेट्रिवोर्स कहले कोन बुझो ना ब्रेकिंग द आपण ब्रेकिंग डाउन करूछंदी ऑर्गेनिक वेस्ट को एंड द डेड टिश्यू को तांको हमें कहूचे डिके एंड डिके रु आपनकर डेट्रिवोर्स कोन करंती ना डिके करंती एतिकी जिंस बुझी पारुछ दैट मींस हमें कहा को रिलेट करबा ना डिकंपोजर्स को रिलेट करबा ओमनिवोर्स कहले माने आपण माने कोन बुझसंती ना दिस आर द एनिमल्स आर रेगुलरली कंज्यूम करूछंदी कोन ना बोथ द प्लांट एंड एनिमल कोन बोथ ऑफ माने तांकर फूड रे माने बोथ प्लांट एंड एनिमल को जते बेले रिलेट करूछंती बोथ ओमनी रो आपण माने बुझी परिबे ओमनी प्रेजेंट माने कोन सबु जागा रे जे प्रेजेंट होंती ताको हमें ओमनी प्रेजेंट कहूचे ता माने सबु खाद्य जे खाई परथो ताको हमें ओमनिवोर्स कहिबा ता माने बोथ खाद्य आपनकर केते टाइप रो थाए कि प्लांट थाए एल्स आपनकर कोन थाए ना एनिमल्स थाए तो बोथ प्लांट एंड एनिमल्स जे खाई पारे ताको हमें ओमनिवोर्स कहूचे एतिके बुझी पारुछ क्लियर यस डेड प्लांट एंड एनिमल कथा हमें बुझिबा वेरी गुड चलो हर्बिवोर्स कहूची माने हर्ब सहित हर्बिवोर्स कहूची माने कोन ओनली हर्ब सहित माने जो माने पूरा वेगन ता सहित हम रिलेट कर परिया कार्निवोर्स कहूची माने कोन आपनकर ना जो माने ओनली एनिमल गोटे आपनकर ओनली वेगन गोटे आपनकर कोन ना टोटल नॉन वेगन एतिके क्लियर चलंतु नेक्स्ट मते कहि दियंतु ए pyramid of biomass is a diagram that represent the population at each level of the food chain according to it the base with the highest biomass कोन हबो जते बेले आपण जानि संती गुटे पिरामिड ऑफ कोन बायोमास मु कुहे प्रति ट्रॉफिक लेवल ऊपर को गले 10% लॉस हे जाय each level of the food chain represent कोनसी population at each level कारण एठी आपण को जदी 10,000 आपनकर पॉपुलेशन रहउची एपट को गले आपनकर पुनी 1000 पुनी गले 100 माने पॉपुलेशन आपनकर शो करूछ ना नै प्रति ट्रॉपिक लेवल रे एठी कहछि द बेस विथ द हाईएस्ट बायोमास दा पूरा बेस रहउची ता माने एठी आपनकर की रहउचंदी पूरा बेस रे आपनकर की रहिबे ना जो माने फोटोसिंथेसिस करि पारुथबे माने जो माने प्रोड्यूस करिवे ता परे बाकी सब कंज्यूम करिवे माने फास्ट रे आपनकर की रहिबे ना प्रोड्यूसर्स रहिबे एतिकी जिंसा क्लियर फास्ट किए रहिबे ना प्रोड्यूसर्स आपनकर रहिबे जो माने कैप्चर करूछंती सॉइल लु डायरेक्ट एनर्जी माने सॉइल एनर्जी डायरेक्टली एंड एंकर करूछन द बेस ऑफ ए टिपिकल ऑफराइट आपनकर टेरेस्ट्रियल बायोमास पिरामिड को माने इन्वॉल्व करूछंती ओके डिकंपोजर्स हेले ता परे परे आपनकर आसी जिवे नेक्स्ट चलो so pyramid of biomass is a diagram that represent the population of each trophic level and in the food chain according to it the base has producer with the highest biomass next mate कोन which of the following is not abiotic या भितर कोटा आपनकर abiotic नुह कोटा abiotic नुह एठी पचारछि ताहाले जल्दी आंसर दे दियंतु ता माने जोथिरे आपनकर कोन लाइफ थिबो एठी आपनकर विंड रे तो लाइफ नाही रेन रे लाइफ नाही सॉइल सहित चिपानी किंतु प्लांट रे आपनकर लाइफ अछि बिकॉज़ आपन को कहिथिले दिस इज अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कारण ये आपनकर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करि पारुछि ड्यू टू द प्रोसेस कोदरे ना फोटोसिंथेसिस आपनकर अछि दिस दैट्स व्हाई हमें ताको बायोटिक कंपोनेंट रे एनवायरनमेंट रे कंसीडर करूछे चलो प्लांट इज नॉट ए अबायोटिक दिस इज अ टोटल बायोटिक नेक्स्ट मते कोन व्हिच इकोलॉजिस्ट्स रिसर्च प्रोवाइडेड इवोल्यूशनरी न्यू इनसाइट into how energy and nutrient flow through ecosystem कोन कहिछि आउथरे टिके बुझो कोन कहिछि ना की आपन को ए तथ्य प्रोवाइड करिथिले को विषय रे ना रिवोल्यूशनरी इनसाइट इनटू एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम जहां भी रिवोल्यूशन होउछि आपनकर इनसाइड द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम तांको आपनकर किए देथिले एबे ही आपन को कहिथिले 1942 रे आपनकर किए देथिले ना लाइंडमैन देथिले किए देथिले ऑप्शन डी देथिले ट्रांसलेट देथिले अलिसा ट्रांसलेट को सदबा तुमको इकोसिस्टम सहित रिलेट करैथिली ट्रांसलेट पे आपनकर इकोसिस्टम कॉइन करथिले कोन सब होलबाल करदउछ चार्ल्स हिल्टन आपनकर करथिले जो एनिमल बिहेवियर जोटा टोटल आपनकर नीचे जो रहउछ आपनकर माने एडवांस पॉपुलेशन एंड द कम्युनिटी इकोलॉजी जे की फोकस करूची कहा ऊपर ना एनिमल बिहेवियर ऊपर एनिमल बिहेवियर नीचे ऊपर आपनकर फोकस करूची सब कहला पर पुणी भूली जाउ केमती तुमने मन रखेबी आसो So Raymond L. Lyman's को साथ रिलेट करूचे रिसर्च प्रोवाइड करिसंती इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1942 नेक्स्ट मते कहि दियंतु ए पर्सन देखले त माने को क्रश लागुनी केते हैंडसम पर्सन तम तांको अकॉर्डिंग मन रखनस तांको ना होची लाइनमैन आ से कोन करथिले से आपनकर ए तथ्य प्रोवाइड करथिले थ्रू द इकोसिस्टम द इनसाइट इनटू द हाउ एनर्जी न्यूट्रिएंट फ्लो एनर्जी आपनकर केमती फ्लो होची डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल
एमती करके मन रखना आस नेक्स्ट चलो मते को deserts the rainforest coral reefs and the mangrove are feature of which type of diversity को diversity सहित रिलेट करछ जल्दी हेयर स्टाइल भल लागुनी तमे केन जान दो झियो माने कहबे ना तमे कहबो आस मते को डेजर्ट कहूची ता माने आपनकर भाबिबार अछि आपनकर गैंगेटिक सॉरी आपनकर गैंगेटिक जेनेटिक को दिबे हबनी कोन मते ना ये रेफर करूची टोटल नंबर ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर विद इन द जेनेटिक मेकअप माने आपनकर किछि भी गोटे पर्टिकुलर सिंगल स्पेसीज रे जहां भी जेनेटिक कैरेक्टर होची ये डिफाइन करूची कल्चरल हबनी स्पेसीज हबनी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हबो ना डिस्क्राइब करियो डिफरेंट टाइप्स आपनकर कोन होची फीचर्स ऑफ द डाइवर्सिटी माने इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल हबो देखो सो डेजर्ट्स रेन फॉरेस्ट कोरल रीफ्स एंड द मैंग्रोव्स आर फीचर्स ऑफ द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कारण सब गुडा आपनकर चेंजेस मु तो माने कोन कहछि डाइवर्सिटी माने आपनकर वेरिएशन चेंज आसीबो आ जतले इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहछि माने डेजर्ट रो इकोसिस्टम डिफरेंट रेन फॉरेस्ट रो इकोसिस्टम डिफरेंट रीफ्स आपनकर कोरल रीफ रो इकोसिस्टम डिफरेंट तो तीन जाक डिफरेंट इकोसिस्टम कहछि ताले ता कोन होछि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ही होबो ना हो ना चलो नेक्स्ट मते कोंदु human beings belong to which category of the ecosystem को category को belong करूची human beings who can tell me this quick अरे स्केयर कोई जिके पढ़े साइंस उड़ा ओके खुआ क्रॉस कथा कहले मैटर अलगा हे जीवो अच्छा आशीष बाबू कोन हे मैरिज हे जाई छी तम क्रॉस रो आस राइट आंसर कोन हबो पछारी छी ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग्स टू व्हिच सब खाउची बा से सब खाउची माने कोन ओमनिफोर्स ह्यूमन बीइंग्स आपण माने कोन जो माने वेगान तो समान छाडी दियंत ताको हर्बिवोर्स रे भी तथा लिखवा जीवनी बट स्टिल मैम काली ब्रेकअप हे गला आज टू कम बैक होच अच्छा काली तमर ब्रेकअप हे रिसेंट ब्रेकअप पार्टी को दिन दोछ ब्रेकअप पार्टी को दिन दोछ अच्छा ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग्स टू ओमनिवोर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम बोथ प्लांट एंड एनिमल मैटर human diet typically include a variety of fruits vegetables grains meats dairy etc okay next mate कोन sunlight forms which component of habitat sunlight आपनकर form करूची from which component of habitat आजा सबु तो खाउची yes चाइना बेस्ट एग्जांपल हां चल नेक्स्ट मते कहि दियंतु कोन पचारछि आपनकू कोन पचारछि ना सनलाइट आपनकर फॉर्म अब को हैबिटेट रु क्विक आंसर दे दियो एठी बायोटिक कथा आपनकू कहिछि बायोटिक को हम काहे कि रिलेट करैबानी कारण सनलाइट आपनकर दिस इज अ नॉन लिविंग फैक्टर नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर ताहले हम का बायोटिक कहिबा बोथ बायोटिक सहित रिलेट करैबानी हला चल नेक्स्ट मते कहि दियंतु द लार्ज कार्निवोर्स ऑफ द टर्शियरी कंज्यूमर्स एग्जिस्ट एट व्हिच लेवल ऑफ द फूड चेन देखंतु एठी आपण माने फसिबे एठी फसिबे कारण बहुत पिला कंफ्यूज होंदी द डिफरेंट लेवल्स आपनकर कोउटा प्राइमरी कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर पूरी प्राइमरी प्रोड्यूसर सेकेंडरी प्रोड्यूसर टर्शियरी प्रोड्यूसर एमजी भी अछंदी ताहाले मते कहि दियंतु एठी आपण माने कहा साथ रिलेट करई परिबे एठी पछाची व्हिच लेवल ऑफ फूड चेन कोउठी हबो फोर्थ रे हबो केमिति हबो देखा केमती हबो देखो राइट आंसर केते नंबर हबो फोर्थ बोधे फोर्थ ही आसो तो फास्ट आपन को कहिची प्रोड्यूसर लेवल देन आपन को जो लेवल कहिची आसी जाओ 1 2 3 4 नंबर आपन को रहउची की ना आपन को ईगल रहिला बियर्स रहिला ए मानु को हमें कंसीडर करचे लास्ट लेयर रे जोटा की सबुटु लार्जेस्ट ता परे तांकु कोन ता परे से मानन को के खाइबा को नथांदी से माने कोन ना डिग्रेड हेसिबे से माने बैक्टीरिया फंजी से माने को डिग्रेड करी की माटी रे मिसेइबे क्लियर से माने को रिलेट करे बैक्टीरिया आपन को सेकंड रे आपन को हर्बिवोर्स आसी जीवो क्लियर सॉरी सेकंड रे आपन को नै फिफ्थ रे आपन को लास्ट वन आपन को आसी गले बैक्टीरिया हेसिबो क्लियर एति जिंस हां चलो नेक्स्ट मते कोंतु व्हाट रेफर्स टू एन एनवायरनमेंट इन व्हिच ऑक्सीजन इज रेडिली अवेलेबल कहा को हम रिलेट करछ ऑक्सीजन आपन को रेडिली अवेलेबल अछि जल्दी कोठी जल्दी एंथ्रोपोजेनिक एनारोबिक एरोबिक कोन हबो राइट आंसर ऑक्सीजन प्रेजेंस रे आपनकर जो रिएक्शन हुए हमें ताको एरोबिक रिएक्शन बोली जानिचे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक ता माने बचैची व्हाट रेफर्स टू एन एनवायरनमेंट इन व्हिच ऑक्सीजन इज रेडिली अवेलेबल डेफिनेटली आपनकर कोन हे जिवो ना एरोबिक
that means the term माने this is a biological term आमे कहूचे it define कहूचे the chemical pathways and the organisms जो माने environment भीतर रहउछन्ती environmental conditions रहउछन्ती and require करछन्ती कोन ना आपनकर oxygen require करछन्ती to life form okay next चला anthropogenic that means the man made हेले anthropogenic okay acidification is a different term acidification माने कोन था कहलो what do you mean by the acidification कोन हबो ना में जानछो डिफरेंट पीएच लेवल आपनकर थाए आर्थ ओशन रे हेला ओशन लेयर रे हेला आर्थ सॉइल लेवल रे हेला प्राइमरीली कॉज्ड बाय कोथरे आपनकर ना कार्बन डाइऑक्साइड पई आपनकर एसिडिफिकेशन हुए एसिड रेन आपनकर हुए जानि थिबे ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एसिडिफिकेशन ओके नेक्स्ट चला मते कहंतु एठे कोन एसिडिफिकेशन कहि देछि व्हाट रेफर्स टू द एनवायरनमेंट इन व्हिच ऑक्सीजन इज रेडिली अवेलेबल acidic environment oxygen is readily available process by which the solution become more acidic सहित oxygen available कोन aerobic हबो एडा भूल से दे देछ हैला हां रे aerobic हबो भूल से दे देछ आसो मते को what are the microorganisms that breaks down the dead remains and waste products of organisms called कोन हे परियो मते के कहबो क्विक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो माने ब्रेक डाउन करूछंती द ऑर्गेनिक मैटर को तांको हमें कोन कहबा क्विक फर्स्ट कहला आपनकर कंज्यूमर सेकंड कहला प्रोड्यूसर देन कहला आपनकर कोन डिकंपोजर नॉन ऑफ तो बिल्कुल हबनी जो माने डेड ऑर्गेनिज्म को सेमान को हमें कोन कहछे ना डिकंपोजर्स बोली तांको हमें कहूचे दे आर द बैक्टीरिया हैला फंजी हैला जो माने आपनकर डाइजेस्ट करंती एंजाइम्स टू रिसाइकिल करंती आपनकर न्यूट्रिएंट को क्लियर नेक्स्ट चलो मते कहि दियंतु अंडर व्हिच मिनिस्ट्री डज द इंडियन इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिके फोकस कर अंडर व्हिच मिनिस्ट्री डज द इंडियन आपनकर एंटार्क्टिक एक्ट 2022 एम टू बी सेल्फ रिलायंट एंड टेक इंडियाज ओन नेशनल measures to protect the Antarctic environment and the related ecosystem as well as proposes to establish the Indian Antarctic Authority IAA कहा को हमें रिलेट करू छे कहले मते जल्दी क्विकली कहि दियो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से हमें रिलेट करबे कि ये रेगुलेट करबे कोन ना जेति कि नेशनल ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन अछि आपनकर इलेक्ट्रिसिटी आपनकर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिसिटिकल आपनकर इंफ्रास्ट्रक्चर अछि इवन थर्मल पावर ता सहित हमें एनर्जी को रिलेट करबा किंतु एतले आपन को कहिबो अर्थ साइंस कथा कहा कथा ना अर्थ साइंस कथा कहबो सेते बेले आपण माने रिलेट करै देबे कहा सहित ना भारती एंड मैत्री माने अछि तो रिसर्च स्टेशन ताको आपण माने रिलेट करै देबे हैला नेक्स्ट देखो इंडियन अंटार्कटिक एक्ट आपनकर दीटा रिलेट करै परिबा कहा सहित ना भारती एंड मैत्री सहित मन रखिबे नेक्स्ट मते कोंतु इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन द आपनकर कोन बचाची ना नवधान्य मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1987 बाय पचारची इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन को नै कि आपनकर फॉरेस्ट कंजर्वेशन को नै कि गोटे मूवमेंट आपनकर इनिशिएट हेतिला तार ना होची नवधान्य मूवमेंट जो नवधान्य मूवमेंट अछि ताको इनिशिएट किए करथले ऑप्शन बी नाइ रे गधस्थळ आपनकर के करले वंदना शिव ओके founded the movement 1987 promote करिवा लागि biodiversity conservation को organic farming को even seed saving कोन autonomy for the local farmers मानको बिहाफ रे देखो in the context of forest conservation the navadanya movement was started in 1987 by वंदना शिवंक द्वारा एटा आपनकर हेतिला ठीक अछि क्लियर चलंतु नेक्स्ट एठी जो पंडुरांग हेगड़े अछंती ये पे आपनकर एपिको मूवमेंट सहित ये पे आपनकर वेस्टर्न घाट एपिको मूवमेंट सहित कनेक्टेड मने नै कि हिस्ट्री वाली पढाई भी त माने को हां चलो नेक्स्ट मते कहंतु अच्छा अगेन कहूची आपनकर जदी बैच नेबार अछि अनुशासन बैच आपन माने जॉइन करि परिबे 3999 देई की सॉरी अनुशासन कोच आपण माने महापैक नै परिबे 3999 देखि एठी आपण माने मो कोड जे कोनोसी बैच आपण माने परचेस करूसंदी मो कोड SPG10 यूज करि परिबे टू गेट अ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ओके एंड समर्थ बैच रहउछे एटा आपनकर CGL मेंस रा टेस्ट सीरीज 199 अवेलेबल अछि एंड पेड क्लास रा टेस्ट आपनकर टोटल स्ट्रक्चर एमिति अछि 200 टा आपनकर माने क्लासेस प्रोवाइड करा जाउछि ऑलमोस्ट 200 प्रोसेस रहउछि मेंशन होछि 200 देन 3000 MCQs एंड आपनकर टेस्ट सीरीज ता सहित लाइव डिस्कशन
एंड गाइड आपनकर एसपीजी 10 रहउची ता कोड रे आपण माने मो कोड यूज करि परिबे आपण माने 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पई ता सहित आपण माने मो ग्रुप रे भी जॉइन हे परिबे सेठी आपण को किछि स्पेशल गाइडेंस मो प्रोवाइड करि नेक्स्ट मते कोंतु हां हां थैंक यू सौम्य थैंक यू आसा नेक्स्ट मते कोंतु इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस एनवायरनमेंट कोन कहै इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ट्रीटीज protocols and the places associated with them which of the following is not correctly fair कोटा आपनकर करेक्टली पेयर नाही मते की कहि परिबा जल्दी आंसर दियो So, in the context of various environment protection treaties, protocols, and the places associated with them, which of the following is not correctly कहा को हम रिलेट करे परिबा गोटे गोटे पढ़ी चलो पढ़ला पर ही जानि परिबो फास्ट कहछि कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीड्योर फॉर सर्टेन हैजर्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड केमिकल पेस्टिसाइड सहित हम स्टॉकहोम को केमते रिलेट करे परिबा स्टॉकहोम सहित हम रिलेट केमती करि परिबा एटा आपनकर पीआईसी हे जिवो ना पीआईसी कन्वेंशन आपनकर ये हे जिवो ये आपनकर पीआईसी कन्वेंशन हे जिवो तेनो फर्स्ट ऑप्शन ही आपनकर रॉन्ग हे गला कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीड्योर फॉर द सर्टेन हैजर्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड the correct location is the Rotterdam and not Stockholm this is known as the the Rotterdam convention बोली हमें ताको कहउची clear PIC convention मते कोंतो next the realizing the importance of maintaining the cleanliness of the water bodies the government of India passed the water that is the prevention and control of pollution act what to in which year to safeguard our water resources कोटा हबो safeguard करिवा पई जल्दी पीओपी टा मैम स्टॉकहोम हबो पीओपी टा आपण पीओपी कथा पचानी पीआईसी कथा कहिची पीआईसी कथा कहिची प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट कन्वेंशन जोटा कि साइन हेची रॉटरडम रे एटा जोटा प्रीवियसली आपनकर सीबीडी रहइबो सीबीडी आपनकर नगोया प्रोटोकॉल ऑन बायोडायवर्सिटी कैटिजनरी कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट हैजर्डस वेस्ट आपनकर बासेल कन्वेंशन कारण हेल्थ ह्यूमन रिलेटेड कहि दिली ह्यूमन रिलेटेड आपनकर कोन हे जिवो ना बासेल रिलेटेड तो ये तीनटा जाक ठीक अछि देखु ना ऑड वन आउट करी कि भी चलो हैला नेक्स्ट चलो मते कोंतु रियलाइजिंग द इंपोर्टेंस ऑफ द मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस ऑफ द वाटर बॉडीज कोन हबो राइट आंसर कोन हबो इठी राइट आंसर के कहिबो जल्दी 1974 very good देखो so the water prevention and control of pollution act was enacted by the government of India in 1974 next mate कहि दियंतु which of the following is the world's top environmental conservation award top कहा को हमें कहिबा what is the top environmental conservation award quick कौन हबो राइट आंसर गोल्डन बियर अवार्ड गोल्डन पांडा अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड कहा को हबो जेतेबेले पचारुछि एनवायरनमेंट को नै कि ताको हमें वर्ल्ड वाइड फंड आपनकर कोन ना फॉर द नेचर आपनकर फंडिंग करे WWF एंड WWF आपनकर फंडिंग करूछि कहा को ना द गोल्डन पांडा माने मु वाला पांडा नै पांडा वाला हैला गोल्डन पांडा अवार्ड आकर आसुछि हैला हाईएस्ट ग्लोबल कंजर्वेशन अवार्ड नेक्स्ट देखो so the golden panda award is recognized as a prestigious award in the field of environmental conservation funding के करूछि WWF funding करूछि okay next माने कोन when was the national green tribunal formed national green tribunal आपनकर केबे फॉर्म हेतिला when national green tribunal आपनकर केबे फॉर्म हेतिला क्विकली कुह जल्दी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपनकर केबे फॉर्म हेतिला 2010 रे वेरी गुड अक्टोबर 18 2010 रे आपनकर एनजीटी वाज फॉर्मली क्रिएटेड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट हैला हैंडल के करछि ना एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स एक्सेस माने एक्सपीडियसली ताकू एक्सेप्ट माने हैंडल करूछि सी इट इज हेडक्वार्टर इन द दिल्ली एंड इज अदर रीजनल headquarter is in the Delhi and there are other regional offices भोपाल रे पुणे रे कोलकाता रे मद्रास रे भी अछि
Next mate कहतु in which year was the National Biodiversity Authority a statutory autonomous body under the Ministry of Environment and Forest Government of India established. केतेबेले पचारिछि now what is the Biodiversity Authority or a statutory autonomous body under the ministry कौन कहि परिबो एठी कौन कहि परिबो केबे आपनकर हेतिला 2010 6 3 केबे हेतिला क्विक 2010 रे हेतिला ना बिल्कुल नहीं 2003 रे हेतिला 2003 रे हेतिला आपनकर autonomous body was officially set up in the central government कोउठी हितिला ना आपनकर चेन्नई रे आपनकर एस्टैब्लिश हेतिला बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट अंडर 2002 रे 2003 रे हेतिला so the National Biodiversity Authority NBA was established in 2003 it was established under the Biological Diversity Act 2002 clear next चलो मते कोंतु which species are these species of plant which species are the species species are those species of plants and animals that are found especially in a particular area गोटे particular area रे हमें ताकू पाउछ आपनकर कहा को जल्दी जते बेले particular area हे गला ताकू हमें कोन कहि परिबा ना naturally restrict हेछि particular area पई localized geographical area पई ताकू हमें endangered कहि परिबा सॉरी endangered कोन endemic ताकू हमें endemic कहि परिबा क्लियर हां endemic जते बेले vulnerable कहूची that means कोन ना this is a status means आपनकर species जो माने कोन हाई रिस्क आपनकर वाइल्ड लाइफ नेचर ए सब को नै कि आपनकर हाईली रिस्क अछंती से मानक हम vulnerable critical endangered and endangered बोली हमें कहूची clear हां चलंतु next so endemic species are those species of plants and animals that are found especially in a particular area they are not naturally found anywhere else next मते कहंतु what is in situ conservation method in situ तो मानू आर क्लास रे बुझेइतिली माने प्रीवियस क्लास रे मते कहलो जो in situ conservation method अछि what does it mean मैम एग्जांपल पाइठ देली एग्जांपल पे लिखा है साल ट्री हैला पर्टिकुलर गोटे फॉरेस्ट रे वाइल्ड मैंगो पर्टिकुलर एसियाटिक लायन होला एवडा सब आपण माने एग्जांपल ले परिबे व्हाट इज द इन सिटू कंजर्वेशन माने कोन बुझुचो बोटानिकल गार्डन वेरी गुड आसो तो इन सिटू कंजर्वेशन कहूची इट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन एरियाज एट द वाटर हाउस सॉरी एज अ वेयर हाउस ऑफ द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर गोटे वेयर हाउस को हमको दले कहूची मींस हमें कहि परिबा दिस इज द कोन माने थिंग दैट इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड इकोसिस्टम हैला आपनकर प्रोटेक्ट करिवो पार्क्स मानु को इवन रिजर्व करि के रखिबो डिफरेंट आपनकर कोन स्पेसीज मानु को अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल एनवायरनमेंट नेक्स्ट मते कहि दियंतु सो एठी रहला इन सिटू कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व सैक्रेड ग्रुप्स ए समस्त आपनकर पळेबे अंडर द इन सिटू कंजर्वेशन नेक्स्ट मते कहि दियंतु बोटानिकल गार्डन आपनकर एक सिटू रे जिबि ना बोटानिकल गार्डन को केमते कहजो इन सिटू माने कोन कहली तांकर नेचुरल हैबिटेट भीतर रखबाटा होची इन सिटू सेठू बाहर करियो माने सेठू एग्जिट करे कि गोटे छोटिया जोन भीतर रखियो माने सेटा होची एक सिटू छोटिया जोन भीतर आपनकर कोन होइछो जू रहिला बोटानिकल गार्डन होइला ए सब एक सिटू हैला नेक्स्ट चलो biodiversity is defined in which of the following forms तो biodiversity को अपन डिफाइन करिवे केमिति yes क्या मते कोन biodiversity is defined biodiversity means आपनकर कोन होची क्विकली कहो what does it mean by the biodiversity biodiversity is defined in which of the following forms कौन कहि परिबो ठी that means the diversity of organisms biodiversity organisms को हमें कहबा जहा पे देह रे आपनकर living beings ताको हमें कहूची कोन ताको देह रे माने bio means आपनकर living ता माने bio means living हला living means organisms okay diversity हला diversity तो diversity of organisms को हमें कहि परिबा तो wide diversity of climate हबनी one type of organisms ना आपनकर कोन हे जिबाटी wide diversity of organisms कोन हे जिवो wide diversity of organism गोटे organism हेले आपनकर organism होई जिवो organisms काई के लागिवो होना नहीं चलन नेक्स्ट मते कोंदु सो थ्री टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी गोटे डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज रहउची डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स स्पीसीज अंडर आसीबो दैट वेरी माने वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन अ गिवन एरिया ताको हमें कहउचे डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज
डायवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम कहूची वैरायटी ऑफ हैबिटेट इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज कहले आपनकर इकोसिस्टम रे पळेबो डायवर्सिटी ऑफ जीन्स कहले वैरायटी ऑफ जेनेटिक आपनकर मेकअप विदिन अ स्पेसिस कहले आपनकर डायवर्सिटी ऑफ जीन्स पळेबो मते कहतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेमिक स्पेसिस या भीतर आपनकर एंडेमिक स्पेसिस एबे कोन कहले ना पर्टिकुलर गोटिए जियोग्राफिकल रीजन जति मिलुची अदर कोनोसी प्लांट रे आपण माने ताकू देखि परिबेनी ताकू हमें कहबे दैट इज द एंडेमिक वन ता माने हमें कहा को रिलेट करे एठी पछाची निकोबार पिजन इंडियन वाइल्ड सब जगह रे आपनकर जेते घंच जंगल आपण माने ताकू पाई परिबे दैट वाज अ mammal is classified as an endangered animal group आपण माने पाई परिबे माने मोस्टली आपनकर रेस्ट्रिक्टेड अछि जोडा कि आपनकर लिटिल रन ऑफ कच रे मिलिबो बट दिस इज नॉट माने हिस्टोरिकली आपनकर कंफर्म हेनी जस्ट जंगल माने लोकल पैच रे आपनकर ये पळेबो किंतु रिलेट करबो कोन जानि जेते बेला आपनको एंडेमिक कहूची निकोबार पिजन को मन रखता निकोबार पिजन आपनकर नेटिव बर्ड गोटे नउची निकोबार रे जोडा कि एक्जेक्टली आपण माने एठी निकोबार आइलैंड रे पाइबे अंगा कोनोसी जगह ताकू पाइबे नाही एंड ये आपनकर मेंशन है कि अछि कोन साइट्स ताकू अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स रे मेंशन है कि अछि थ्रेटेड ग्रुप रे निकोबार पिजन क्लियर नेक्स्ट चलंतु मते कोंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज वन ऑफ द which of the following plants is on the verge of extinction due to our intensity towards the environment कौन हबो कहलो what will be the right answer एठी आपन को पचाची कहा को हमें रिलेट करै परिबा माने पचारी जी among all which plant is critically endangered हमें कहि परिबा जल्दी को कहा को कहि परिबा critically endangered group रे आपन को की अछि कोन बिकॉज ऑफ द एक्सीडिंगली रेयर क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप रे आपनकर की अछि ना मधुका इनसाइट्स आपनकर अछि देखो मधुका इंसिनिन्स इनसाइट्स कोइ अछि मधुका इंसिनिन्स आपनकर अछि दिस इज अ वाइल्ड वैरायटी ऑफ महुआ नेटिव टू इंडिया जोटा आपनकर ओके and it is classified as critically endangered on the IUCN red list रे आपनकर अछि due to the severe habitat loss river pollution and environmental degradation पई आपनकर ये धीरे धीरे कोन ना दिस इज अ हाइडल पावर प्रोजेक्ट पई आपनकर मध्य कमी गला नेक्स्ट मते कोंदु सल्फर डाइऑक्साइड pollution is indicated by an excessive growth of which of the following कोन हबा राइट आंसर आपनकर यार कोन हबा क्विकली को सल्फर डाइऑक्साइड pollution is indicated by sulfur dioxide pollution is indicated by sulfur dioxide जदि बढ़ी जाइछि तार pollution level बढ़ी जाइछि ताहाले हमें कोन कहि परिबा symbiotic organisms absorb करंती air nutrients माननकु directly and are highly कोन sensitive bio indicators so माने die off करंती when the sulfur dioxide is present that means हमें कहिबा एटा lichens माननकु कहा को कहिबा lichens भलतांश दोजो त माने आसो so intensive growth of lichens points to the oily and gaseous pollutant sulfur dioxide रहिबो present मते कहि देलो the world's only floating national park Keibul Lamjao national park is located floating island floating national park ए सब कहिला माने आपण मान जानि संती कोन लोकटक मणिपुर ता सहित रिलेट करै परियो floating national park located on the लोकटक lake हेले लोकटक नेशनल पार्क रो ना हेले कोन होची ना लामजाओ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ क्लियर एंड आसाम रे आपनकर कोन अछि काजीरंगा अछि मानस अछि ताकू भी आपण माने रिलेट करै परिबे काजीरंगा मानस नागालैंड रे आपनकर कोन अछि नागालैंड रे इंपोर्टेंट तो नाही आपनकर नागालैंड ऊपर पचनी बट फिर भी मन रखंतु आपनकर इंटान की नेशनल पार्क आपनकर नागालैंड रे त्रिपुरा रे आपनकर कोन अछि दैट इज द क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क कोन क्लाउडेड न्यू पार्क क्लियर नेक्स्ट मते कहि दियंतु on which date international day of biological diversity is celebrated आसा टी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आसलानी व्यस्त होनी बोरिंग होबनी आसा को मते इंटरनेशनल डे कोन कहूची what does the international on which date we are celebrating the international day for biological diversity कोन कहि परिबो फेस ए केमती हैला रे तमरो 22 मई हो ना 22 जून रे केबे हैला 22 जून रे तमनकर केबे हैला देखि दिलो 22 जून रे सेलिब्रेट हैला होडिया हां चलो नेक्स्ट 17 मई टाकू मन रखतंतु इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे
वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे को हमर क्लास हैला नेक्स्ट मते कोंदु इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज संभर लेक लोकेटेड संभर लेक आपनकर कोठी प्रेजेंट अछि क्विक को स्टेट रे आपनकर संभर लेक प्रेजेंटेड माने प्रेजेंट अछि गुजरात रे बिल्कुल हबनी गुजरात रे हमें कोन जानचे जल्दी को गुजरात रे आपनकर रन ऑफ कच्छ अछि हन नहीं तो संभर लेक आपनकर कोठी राजस्थान रे आसीबो पंजाब कहिले आपण माने कोन रिलेट कर परिबे हरिके वाटरलैंड आपनकर अछि मिजोरम कहिले मिजोरम सहित आपण माने रिलेट करि परिबे का सहित बहुत सारा हिली टेरियन आपनकर अछि फ्रेश वाटर बॉडीज बहुत सारा आपनकर अछि एंति कि पलक दिल आपनकर कोठी मिजोरम रे पलक ओके चलो नेक्स्ट डी होची आपनकर कोठी ना राजस्थान रे आपनकर प्रेजेंट अछि संभर लेक क्लियर क्लियर सो नागपुर जयपुर एंड अजमेर तीनटा जाक डिस्ट्रिक्ट को कवर अप करी की रखिछि संभर नेक्स्ट मते कोंदु what are the major biodiversity hotspots of India कोडा आपनकर मेजर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहले इंडिया रो जल्दी कहि दियंतु ए भितर मते 1 2 3 1 2 3 एमती करी के कोन आंसर कोन हबो वेस्टर्न घाट तीनटा जाक हबो 1 2 1 3 तीनटा जाक हबो ऑल हबो 1 2 1 3 और नहीं मते कोंदु बिकॉज़ all three regions are officially designated हेची global biodiversity hotspots due to their high endemism and the habitat loss states okay next mate कोंदु which of the following states has the maximum area of mangrove forest कहा को हमें कहूचे which of the following state has the maximum area of mangrove forest कहा थी आपनकर अछि क्विकली कहबो किए मते जल्दी which of the following states has the maximum area of mangrove forest कोठी हबो आपनकर दीटा जगह जते बेला आपन मानु कहिथिली अच्छा जो माने पेड क्लास पिला अछन से माने कहिलो फर्स्ट आपनकर हे गला वेस्ट बंगाल इंडिया कथा पछे सेकंड आपनकर मैंग्रोव अधिक कोठी अछि क्विक सेकंड मैंग्रोव आपनकर कोठी अछि एठी आपन को पैचेस अकॉर्डिंग कहि नाही एठी आपन को आज पर द पैचेस पचारि नाही एठी आपन को एरिया वाइज पचारछि मो एरिया वाइज पचारछि सेकंड आपनकर की हबो जल्दी श्री ओडिसा ओडिसा पैचेस रे छुआ कोन हबो सेकंड आपनकर गुजरात थर्ड के हबो जल्दी थर्ड के हबो अरे आंसर दियो एमिति माटी खाइबो अंडमान एंड निकोबर गुजरात भी नुआ यापनकर तमिलनाडु आसीबो सेकंड रे वेस्ट बंगाल तमिलनाडु तापर आसीबो आपनकर अंडमान एंड निकोबर आसीबो थर्ड रे यदि सेम जिंस आपन को पैचेस रे पचारुची ताहाले आपन माने जानिबे सॉरी यदि थर्ड आपन को पैचेस रे पचारुची ताहाले ओडिसा आसीबो सेकंड रे आपनकर एज पर द पैचेस माने कोन इंडिया रो सेकंड रे ओडिसा भीतर कनिया सेति लागि हमें लिटिल सुंदरबन ताकू हमें कहिबा क्लियर क्लियर तमे कहितिला फास्ट रू अच्छा हाउ आसा मते को सुंदरबन इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड द सुंदरबन इज a UNESCO world heritage site it is crucial for its biodiversity and as a habitat of the Bengal tiger where is the great barrier reef located great barrier reef आपनकर कोठी लोकेट अछि मते कोंदु ग्रेट बैरियर रीफ आपनकर कोठी प्रेजेंट क्विक ग्रेट बैरियर रीफ आपनकर कोठी प्रेजेंट अछि पैसिफिक ओशन रे कोठी 2300 किलोमीटर पर्यंत आपनकर कोरल रीफ 2300 किलोमीटर बुझी पाछो त केते लंबा हेलानी कोरल रीफ आपनकर व्यापी की अछि हैला नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पर्यंत next the Great Barrier Reef is located in the Pacific Ocean the Great Barrier Reef is located see this is the reef okay आपनकर present अछि and located in the sea coast of Queensland Australia मते कोंतु which of the following animal is found only in the Gir forest of India only Gir forest आपनकर एही animal देखा जाय कोटा आपनकर जल्दी कोंतु गुजरात र गिर कोटा हबा आपनकर गुजरात र गिर क्विक एसेटिक
एसिएटिक लायन वेरी गुड ब्लैक पैंथर आपण माने कोठी देखिया को पाइबे एक्जेक्टली कोड पर्टिकुलर जगह नुह किंतु बिकॉज ऑफ द कलर आपनकर वेरिएंट ताको ब्लैक पैंथर हम कहूचे ओके नेक्स्ट चलंतु स्नो लियोपार्ड हेले त आपण माने पढेबे कोठी की तुंद्रा एरिया आसा एसिएटिक लायन इज फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट इन इंडिया नेक्स्ट मते कोंतु हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया इंडिया रे टोटल केतेटा बायोस्फीयर रिजर्व अछि मते कहिलो हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया कहि चलो As per the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has officially designate करिसेंती टोटल केतेटा ना 18टा 18टा हैला 18टा आपनकर टोटल अछि एंड एटा आल्सो आपनकर मैप रे माने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व अंडर रे भी जाउछ एंड 18टा को जगह रे आपनकर अछंती एठी देखि दियो आउट ऑफ माने टोटल इंडिया रे 8टा किंतु आउट ऑफ दैट आपनकर 13टा ओनली एक्सेप्टेड इज globally them being internationally recognized under the UNESCO Man and Biosphere Reserve मैप रे आपनकर सॉरी मैप रे आपनकर ओनली 13टा अछि हैला चलो नेक्स्ट मते कहजन 13टा कोन सब घोषैथिली मने अछि त पेड़ पिला 13टा ट्रिक देइथिली मते कहंदु व्हिच इज द ओनली मैंग्रोव हैबिटेट इन द वर्ल्ड फॉर अच्छा मते कहदिले 13टा भितरु फास्ट कोटा कहिथिली 0104 जल्दी कहि दियो 0104 क्विक जल्दी 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 आंसर दियो नीलगिरी 0n 0 नील जल्दी कौन है फॉर्मूला सहित को देखिए पेड़ पिला की अच्छा कहीं ना रे जीरो नील 4 नंद है नहीं जीरो नील आपनकर कोन 2000 मसिया रे 2000 मसिया रे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फास्ट एंड आपनकर 2000 मसिया रे फर्स्ट टाइम पे यूनेस्को मैप रे जाइतिला हाँ जीरो नील आपनकर सेकंड नाम थिला जीरो नील सेकंड नाम थिला ओके 2002 रे आपनकर नंदा देवी चलो मने नाही त माने के ना हो आसो मते को व्हिच इज द ओनली मैंग्रोव हैबिटेट इन द वर्ल्ड फॉर द पैंथेरा टाइग्रिस स्पीशीज सहित कहा को रिलेट करेबो क्विक पैंथेरा टाइग्रिस स्पीशीज सहित कहा को रिलेट करेबो जल्दी आंसर दियो पैंथेरा टाइग्रिस कहले आपण माने रिलेट करेबे कहा को सहित ना सुंदरबन सहित रिलेट करै परिबे सुंदरबन मैसिव डेल्टा आपनकर स्पैन करूची एंड एठी आपनकर पैंथेरा टाइग्रिस कोन दे आर द स्विमिंग रॉयल बेंगल टाइगर्स बोली हम तांको अर्थ जानि छी क्लियर नेक्स्ट चलंतु सो सुंदरबन इज द ओनली मैंग्रोव हैबिटेट इन द वर्ल्ड फॉर द पैंथेरा टाइग्रिस स्पीशीज द सुंदरबन इज अ ह्यूज मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन शेयर्ड बाय द इंडिया एंड बांग्लादेश मते कोंतु व्हिच एक्ट वाज क्रिएटेड टू स्टॉप द illegal trade of wildlife and their derived parts in India कहा को हम रिलेट करछे which act was created को act आपनकर क्रिएट हेतिला जल्दी माने वाइल्ड लाइफ कर जदी आपनकर पार्ट्स कथा कह जाय माने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करबा लागि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को हम रिलेट करे परिबा इट इज एस्टैब्लिशेस द स्ट्रिक्ट लीगल शेड्यूल्स प्रोटेक्ट करछ एनिमल स्पीशीज को नेक्स्ट मते कोंतु पचाचे the statements below are related to afforestation the statements below are related to afforestation कहां को हमें रिलेट करेबा एठी जल्दी को the statement कोडा को हमें रिलेट करे परिबा afforestation माने आपन को कोन कहूची that prevent the floods and balance करिवो जे इकोसिस्टम को ये prevent करिवो only ए हेजिवो afforestation can balance our ecosystem एटा आपनकर करूनी afforestation can prevent the flood एटा आपनकर करूची ताहाले हमें कोन रिलेट करि परिबा ताहाले हमें only ए को रिलेट करि परिबा कोन नै मते कोंतु yes or no yes चलो next so planting trees helps to stabilize soil and reduces the surface runoff volume and speed they absorb the carbon dioxide and release oxygen helping to purify the air they also promote water conservation soil health maintain करिक रखुची climate management also
नेक्स्ट मते कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया has 0% forest area as per the Indian State of Forest Report 2019 एठी आपन को इंडियन स्टेट पचारिछि कोटा आपनकर 0% रे अछि कुआ मते इंडियन कैन देछि ना हां देछि कुआ मते जल्दी which union territories or Indian state आपन को एठी पचारिछि ता माने हम रिलेट करै परिबा कि कोन लाक्षाद्वीप लाक्षाद्वीप आपनकर जदि एफएसआई माने फॉरेस्ट सर्वे आपनकर रिपोर्ट अकॉर्डिंग माने फॉरेस्ट सर्वे इंडिया देखिबा जदि हम रिपोर्ट ताहाले आपनकर लॉस ऑफ वेजिटेशन हमें कहि परिबा कंसिस्ट ऑफ एंटायरली कोन कोकोनट प्लांट एंड आपनकर एग्रो फॉरेस्ट्री ऊपर अछि जोडा कि क्वालिफाई करूनी आपनकर नेचुरल फॉरेस्ट्री एमती नाही प्लांट नाही बट मोस्ट ओवर आपनकर कोन प्रेजेंट अछि द कोकोनट प्लांट ओके next चलंतु so Lakshadweep and the archipelago in the Arabian Sea has no forest this is because the island are mostly made up of coral atolls next mate kohuntu the Indian Forest Act 1927 that was enacted after repealing which of the following Indian Forest Acts kon hobo jaldi ko kon hobo mate kohuntu Indian Forest Act 1927 replaced करूची काहाकू 47 बोथ हे आपनकर 47 कोन थिला कि the statement below are related to afforestation can prevent flood afforestation can balance our ecosystem which of the following statement is are correct only 8 oops sorry both हबो गलती से मिस्टेक हो गया बोथ हबो छुआटा बोथ हबो चलो नेक्स्ट मते कोंदु now the Indian Forest Act 1927 that was enacted after repealing which of the following Indian Forest Act को Indian Forest Act repeal हला पर आपनकर हेछि मते कोंदु जल्दी that is the Indian Forest Act 1878 Indian Forest Act 1878 so the relate करेबा because in 1927 the colonial law आपनकर heavily कोन कंसोलिडेट करूथिला आपनकर इंपोज हेइथिला the legal provisions मानको नेकी timber transit rule आपनकर आस्तिला पेड रे ऑलरेडी मु पढाई 1878 रे आपनकर फर्स्ट हेइथिला ओके नेक्स्ट चलंतु मते कोंतु who coined the chipko slogan ecology is permanent economy कि आपनकर चिपको मूवमेंट आपण माने जानि संदी कोठी हेइथिला मते कोंतु चिपको मूवमेंट आपनकर जो हेइथिला डिफोरेस्टेशन को नेकी चिपको मूवमेंट आपनकर हेइथिला मते कोंते जो फेमस स्लोगन आपनकर की देथिले वेरी गुड मॉर्निंग सोनल बाबू निद भांगिला आसंतु सो राइट आंसर आपनकर सुंदरलाल बहुगुणा के सुंदरलाल बहुगुणा आपनकर ए स्टेटमेंट प्रोवाइड करथिले ओके यस नेक्स्ट चलो सो सुंदरलाल बहुगुणा डेवलप्ड द चिपको मोटो इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी मते कोंदु अगेन गाइस कहूची वेदांत क्लासेस रो यदि आपण माने कोनोसी बैच नेबा को चाहछन्ती स्पेसिफिक बैच आपण माने नै परिबे एल्स आपण माने महाटैक नै परिबे जोतिर सब बैच इंक्लूडेड ता सहित आपण माने समर्थ टेस्ट सीरीज नै परिबे 199 सीजीएल मेंस पई एंड आपण माने पेड क्लासेस रो स्ट्रक्चर भलो से जणा आपण को को टाइप रो प्रोवाइड करा जाउची क्वालिटी कंटेंट ता सहित मने रखंतु मो कोड SPG10 जति यूज करछन्ती 10% रो डिस्काउंट आपण को एठी मिलि जिवो जे कोनोसी बैच रे हियर इज द my number मते आपण माने WhatsApp करि परिबे 9124730510 out of that 8260 नाही ऑफिस नंबर भूली गेली एटा 8280532825 ओके चलो नेक्स्ट मते कोंतु अगेन गाइस रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट रेड डाटा बुक रे आपण माने को कोन प्रोवाइडेड हो क्विक रेड डाटा बुक सॉरी वाला नहीं अरविंद अधा हैला सॉरी नी अधा हैला एते जल्दी कोन सॉरी जीवा आंसर दी आंसर उफ भोकोड अलगा लेवल ले लागला बुझिलो Red Data Book provides an account of कौन कहूची endangered plants and animals both को आपण कर what is Red Data Book guys ना
आमे कहि परिबा ग्लोबल इन्वेंटरी आपनकर एटा गोटे जे कि मेंटेन करिक रखुची कोन ना इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर आयुषिन अंडर रे जीवो जे कि रिकॉर्ड करिक रखिबो द रेयर and the threatened आमे कहि परिबा द endangered कहि परिबा endangered कोन फ्लोरा हैला फना हैला इवन द फंजी हैला समस्त विषय आपनकर एठी ऐड करिक रखिबो क्लियर नेक्स्ट चलंतु so the red data book list has animals and plants that are endangered मते कहंतु द साइलेंट वैली मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ इन 1973 साइलेंट वैली को ने कि आपनकर साइलेंट वैली हेतिबो साइलेंट वैली पार्क आपनकर नेशनल पार्क कोठी अछि मते कहूनो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपनकर कोठी अछि सेठी थिबो का माने ओडिसा तो नाही केरला रे अछि कमन यार गाइस एतिके तो जानछंदी ओडिसा कहिला आपन माने नियमगिरी मूवमेंट जानिथिबे वेदांत ग्रुप अगेंस्ट रे थिला नियमगिरी मूवमेंट हैला नेक्स्ट चलंतु मते कहंतु द प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर प्रोजेक्ट एलिफेंट आपनकर केबे लॉन्च हेतिला इंडिया रे के मते कहइबो 1972 रे प्रोजेक्ट टाइगर ठीक 20 वर्ष पर 1992 रे आपनकर लॉन्च हेतिला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फेब्रुअरी रे 1992 मसिया रे प्रोजेक्ट एलिफेंट एशियन एलिफेंट आपनकर नै एशियन एलिफेंट को नै हैला कारण इंडिया रे कहूची माने इंडिया रे ओनली आपनकर एशियन एलिफेंट देखा जा ओके दु टाइप रो गोटे एशियन एलिफेंट गोटे होची आपनकर अफ्रीकन एलिफेंट ओके इंडिया रे देखा जांती एशियन नेक्स्ट चलंतु मते कहंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एम्स टू एंश्योर दैट wild animals and plant species are not threatened by their international trade कौन हबो मते कहंतु which international agreement regulate करूछंती the trade and endangered species कौन हबो trade and endangered species मानन को नै कि कोन कहि परिबा क्विक वाइल्ड लाइफ अरे यार सॉरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आपन 1972 प्रोजेक्ट टाइगर कहि दिली कोडा को लिखि दे 1973 हैला चल सॉरी आंसर देखि देलगी हो आंसर दियो मते को कोन अब आपन कर साइड्स कोन हबो ना साइड्स सब आपन माने करो दिस इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज आपन को कहउ जदी द वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा याकु नै कि आपन कर साइड्स वेरी माने कोन accountable habo okay next chala sites is a worldwide understanding planned and guarantee planned to guarantee that universal exchange in wild creatures and plants doesn't debilitate the survival next mate kohtu the botanical survey of india headquarters is located in which city एटा तो माने जानना थिबो त माने किछि करि परिबनी आसो the botanical survey of india केबेठु आपन कर 1890 रु एस्टैब्लिश हे कि अछि 1890 रु कोठी कोलकाता रे आपनकर अछि ओके यस कोलकाता रे नेक्स्ट चला botanical survey of india here is the head office india headquarters is located in the kolkata the city is known for its historical significance आपन मान जानि संती एस्टैब्लिश हेतला 1890 से मते कोन तो नेक्स्ट which of the following statement is correct about the operation clean art को नै कि आपनकर कोडा हबा राइट आंसर क्विक डेराडून हो मते को यार आंसर कोन हबो ऑपरेशन क्लीन आर्ट याकु नै कि हमें कहबा दिस इज टारगेट द इलीगल स्मगलिंग ऑफ कहा को मैडम सीजीएल रो एडमिट कार्ड जानि नहीं बट मोस्ट प्रोबेबली ए मास भीतर आपनकर आसी जो माने कमिंग जुलाई रे आसी जो कोन तो नेक्स्ट कोन हबो दैट इज मंगूस कहा को नै कि ना आपनकर मंगूस हेयर इनटू द कंट्री मंगूस मान को नै काको ना मंगूस मान को नै कि द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल आपनकर कोन हेची ना एनफोर्समेंट हेची अगेंस्ट द एग्जीक्यूटेड क्रैक डाउन ऑफ द मेकिंग द मंगूस हेयर सी द ऑपरेशन क्लीन आर्ट was the first pan India operation designed explicitly to crack down on the illegal smuggling and trade of the mongoose hair mate ko next which metal ion released from the leather tanning industry pollution leather tanning industry तार pollution रो आपनकर बाहरुची कहा को हम रिलेट करै परिबा जल्दी लेदर कथा पचारुची ता को हम रिलेट करै परिबा कहा को क्रोमियम को रिलेट करै परिबा कि
this is because this is a toxin hexavalent chromium compound हमें कहि पारे जोटा कि हम यूज करू नाही excessively यूज करा जाउची chemical stabilization process रे माने रॉ एनिमल हेल्थ माने जोटा आपनकर कोन लेदर तयारी होची आपनकर गोरु माने आपनकर जे कोनसी पशु चमड़ारू आपनकर तयारी होची से माने को फर्मेंट करबे लागि प्रोसेस रे करी कि कोठी ना क्रोमियम भीतर डुबे के रखा जाउची ओके सो देटा हबा आपनकर आर्सेनिक नाही जिंक नाही मैग्नीशियम नाही नेक्स्ट चलंतु so the leather tanning industry D कोन कोछि मैग्नीशियम है क्रोमियम हबा हां क्रोमियम एटा भूल से दे देछि D एटा आपनकर क्रोमियम कोठी अछि B रे एटा B हला ब्री हबा Next mate kohantu understanding the importance of maintaining the cleanliness of water bodies the government of India passed the water that is the prevention and control of pollution act in the year ko year re apankar ye heithila jaldi kohantu the water prevention and control of pollution act was enacted in kebe heithila ebe jana tahale 1974 रे केबे हितला रिप्रेजेंट करला इंडिया रा फाउंडेशनल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश हेतिला आपनकर कोठी 1974 सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनैक्टेड द वाटर एक्ट 1974 in response to water pollution being increasingly identified as a serious problem affecting the public health safety and general welfare next mate को the process of wastewater treatment commonly known as treatment of what जो प्रोसेस आपनकर वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करी कि ताको आपनकर कोन यूजेबल करी हबो से ट्रीटमेंट रा ना कोन कि मते कहि परिबो क्विक व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ट्रीटमेंट ताको हमें कोन कहूचे ना सीवेज ट्रीटमेंट कहूचे दैट मींस कोन ना मल्टी स्टेज मैकेनिकल और बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस दे कि आपनकर रिमूव करा जिवो द कंटामिनेंट्स फ्रॉम आपनकर डोमेस्टिक एंड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रन ऑफ क्लियर Yes, sewage treatment. Next, chalantu. Mate kuhantu, what is the GDP called that is expressed by in apankar kon adjusting the cost with respect to environmental pollution and exploitation of natural resources. Kon haba right answer mate kuho ethi? Ethi kon haba right answer? Quick. What is the GDP? GDP रा ना हमें को GDP कहूचे जेते बेला आपन को कहूची environment कथा ता माने कहा कथा ना green कथा माने ग्रीन माने ग्रीनरी प्लांट ता माने ता ग्रीन जीडीपी आपनकर हेजिबो को जीडीपी हेजिबो ब्लू जीडीपी केमथि होबो ब्लू जीडीपी हेले आपनकर वाटर रिलेटेड ना छुआ तो ग्रॉस आपनकर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फिगर करूचे एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस रिसोर्सेस डिप्लीशन एंड ताकर जति की कार्बन डैमेज एक्ट रहउची कॉस्ट रहउची सेमान को नै हला ग्रीन हबो ना ग्रीन जीडीपी व्हिच मेजर्स द इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर डिडक्टिंग द एनवायरमेंटल डैमेजेस from traditional measurements such as the pollution and the depletion of the natural resources. Clear? Next mate kohantu DDT has an adverse effect on our environment because DDT gote adverse effect amara environment को पकोछि हा ना नै मते कोंतु बट एटा कोउथरे पकोछि केमिति पकोछि जल्दी DDT this is a very broad spectrum C केमिति हबरे नॉन सिलेक्टिव केमिकल इंसेक्टिसाइड जोटा कि आपनकर इनडिस्क्रिमिनेटली हमें कोन पॉइजन वाइटल नॉन टारगेट यूज करूछे जे कि आपनकर किल करूछे कोन ना बैक्टीरियल इंसेक्ट्स लाइक आपनकर बीस मान को कोन ना मारि दोछ ओके यस चलो सो नॉन टारगेट टॉक्सिसिटी डीडीटी जोटा का हम कहूछे डाइक्लोरो डाइफिनाइल Dichloroethane boli is a non-selective chemical insecticide. It does not distinguish between harmful pests and the helpful organisms. तो इथिरे हमर bees माने भी मरि जासन those are the helpful organisms. Next मते कहंतु what is which is reducing the degree or intensity of pollution or कोन eliminating it. कोन हबो right answer? Reducing or eliminating the pollution is called what? Is called what? को मते कोन हबो राइट आंसर ताकू माइटिगेशन हमें कहिबा कोन कहिबा ए केमति हबो अरविंद ए केमिति हबो सस्मिता बी केमति हबो ए रे आपन को देछि वेंटिलेशन कोन कहूछि कि एटा ओटे मेकानिकल मूवमेंट ऑफ सर्कुलर कोन फ्रेश एयर हमें कहूछि वेंटिलेशन ने ताकू रखा जायछि वेंटिलेटर रे रखा जायछि माने वेंटिलेशन आपनकर एयर पास करा जाउछि एनक्लोज करूछि गोटे स्पेस भीतर डाइल्यूट करिक रखुछि आपनकर इंडोर एयर कोन कोन कंटामिनेट्स को दिया जाउछि
तो absorption तो हबनी पचाइछि reducing of degrade in intensity pollution एटा होछि mitigation. See, now mitigation is the reduction of pollution to a certain degree or even doing away with it completely. Next kondu, which is the world's fast selling boat made entirely of plastic waste aimed at raising awareness about plastic pollution in the oceans. कौन होगा right answer? Quickly दियो. World रो fast selling boat made entirely of plastic waste रे कौन होगा? ता ना कौन? जल्दी. किसी तो जान नथिबो. Flip floppy. कौन होगा? ताकू कौन होगा? Flip floppy होची तारा ना 9 मीटर होची तारा कौन? डोर गोटे सिस्टम होची आपनकर एटा करा देछि. Okay? See. Now, Flip-Floppy is the world's fast-selling boat constructed entirely from plastic waste designed to highlight the issue of plastic pollution and the ocean. Next one, the solids like fats, grease, and oil that float on top of liquid wastewater are called what? ताकू हमें कौन कहिबा? जल्दी. पचारिछि fats, grease, and oil floating on wastewater are called what? ताकू हमें कौन कहूचे? ताकू हमें फ्लूइड बोली कहूचे. कंपोस्ट आपण माने जानिछथि नुवा यूरिया कम्पीट नुवा ता माने जोटा आपण माने जान नथिबे सेटा हबो. दैट मींस आपनकर कोन ना फ्लूइड बोली हमें ताकू कहूचे. दिस इज द टर्म. ओके माने आपनकर स्पेसिफिक कंटेक्स्ट आपनकर स्टैंडर्ड आपनकर कोन ना एग्जामिनर डायरेक्ट पचारि दबो कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्लज. ताले मन रखंतु स्कम कहूची माने oil from scum, while sludge refers to the settled solid matter आपनकर बॉटम लेयर रे तेल रे. हां एठी देखैछि देखो तो एठी आपनकर कोन होउची ना पूरा तळे जाई कि तेल रे जोटा बसी जाउची स्लज डिस्पोजल मेथड्स आपनकर कोन कोन होउची धीरे धीरे आपनकर काढी के ताकू पुनी कोन ना रिफाइनिंग करा जाउची. So sludge is the solid cellular material consisting of fat, grease and the float of the top liquid wastewater. Next mate कहंतु biomagnification is well established for which of the following pollutants? कौन हबा को following pollutants सहित हम रिलेट करछे जल्दी. बिरयानी बिरयानी कौन होचो तम माने करबे. आस आंसर दियो मते. कौन कहउछो तम माने मु तमरे ते लेट रे क्लास करी बोली तम पे बिरयानी मगे देबो या कहउछो. ए कहउछो कि को अरे या कहउछो कि बिरयानी मगे देबो मु पे. हां सो राइट आंसर आपनकर मर्क्यूरी हो. राइट आंसर आपनकर कोन हे जिवो एठी मर्क्यूरी. ओके चलो तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन तो वाटर होउची मर्क्यूरी कंसंट्रेशन आपनकर तळे रहउची सेति लागि आपनकर अल्गल ब्लूम माने सब आपनकर कोन पराफ होचनी. अच्छा मते कहलो मर्क्यूरी रो जदि आपनकर वाटर रे मर्क्यूरी ऐड होउची ताहाले आपनकर जो डिजीज हुए ताको हमें कोन कहउचे. वाटर रे मर्क्यूरी ऐड हेले सेही डिजीज को लुका मु भाबली तमे मते दबो बोली तमे मते मागुछ. छी 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 छाड़ो जानी पर ना मथ एंड हेलानी सैलरी वैल्यू आस नथियो तमे केमति ओटे बिरयानी मागी दोछ विवेक नाही तमरो. यस मीन माटा आ जदी कैडमियम रहिला वाटर रे जदी मर्क्यूरी रहिला एम फॉर मर्क्यूरी एम फॉर मीन माटा जदी कैडमियम रहिला ताहाले ताकू को डिजीज उछुछ कोन ना कहबो ना उछुछ स्टार्ट अप इटाई इटाई. यस दैट इज द मिनमाटा और कौन मिनमाटा है आपनकर मर्क्यूरी इटाई इटाई है कैडमियम माड़ा खाइबो सब. लीड रहिले वाटर जदी लीड रहिला ताकू हमें कोन कहि परिबा विवेक जदी वाटर रे लीड रहिला माने लीड कंटामिनेशन वाटर रे आपनकर को डिजीज हबो. विवेक कहिबे एबे कहितली त मानकू ब्लैक हम बालेश्वर मु इठू बालेश्वर रे मसला बिरयानी खाइबा पे जति की कॉस्ट जीबी मु जाई के आरबी केस रे मंडी खाई के आसीबी. इटाई इटाई भी आउच आउच बोथे ना जानिनी ताहाले नो आइडिया ताहाले नो आइडिया. देखी व्हाट इज आउच आउच.
ouch. ओके हाँ चलो नेक्स्ट मते कहंतु why is carbon monoxide a pollutant कौन ପାଇଁ carbon monoxide के हमें गोटे pollutant बोली कहूचे जल्दी सेई डिजीज रो ना आपणकर कारण आपणकर इटा तो इठु आसीनी ना तार जापानीज नेम आपणकर रहउचे एटा दियो हाँ नाइट्रेट हेले ब्लू बेबी सेल रो मते कहंतु व्हिच इज कार्बन मोनोक्साइड ए why is carbon monoxide a कौन हम ना pollutant कहीं हमें ताकू कहूचे गोटे pollutant बोली carbon monoxide को because it react with our hemoglobin कार्बन मोनोक्साइड डायरेक्टली हमर बॉडी को जदी जाउची ताहाले हमर hemoglobin से रिएक्ट करूची हना नहीं बिकॉज़ कार्बन मोनोक्साइड binds with the blood hemoglobin with the affinity of 200 times next चलंदु मते कोंतु which of the following is the best solution to get rid of non biodegradable waste best solution कोटा में biodegradable waste माने get rid of हे परिबा कोन हैला लिसा कहतु राइट आंसर कौन हम पचारि बेस्ट मेथड टू डिस्पोज माने आमे कोन देखो रिसाइक्लिंग ही करबा डंपिंग बर्निंग करिंग सब तो हबनी ओनली आपनकर कोन ना रिसाइक्लिंग हो क्लियर चलम तो नेक्स्ट मते कहतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो ताजमहल कलर धीरे धीरे आपनकर येलो कलर हे जाउची ट्राई कर स्पीड जावाई अभिमन्यु बाबू कहतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो ताजमहल कलर आपनकर येलो होची कोथि पई क्विक कहि दियंतु जल्दी सल्फर डाइऑक्साइड पई आपनकर कलर चेंज होची सो द येलोइंग ऑफ द ताजमहल इज आल्सो कॉज्ड बाय द सल्फर डाइऑक्साइड एंड ए मेजर एयर पॉल्यूटेंट बोली हमें ताकू जानछे नेक्स्ट माने कहतु फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर called what जते बेले फाइन पार्टिकल्स माने कर आपनकर अछंदी द फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और द लिक्विड ड्रॉपलेट प्रीवियस क्वेश्चन को क्वेश्चन ता कथा कहउछ नै जो ताजमहल कलर आपनक कथा कहउछ ना कोडा कहउछ अलिसा टिके रहि जा लास्ट को टिके रहि जा नेक्स्ट मते कहू फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और द लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑफ सस्पेंडेड इन एयर आर कॉल्ड व्हाट ताको हमें कोन कहू एयर रे हबो विथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अछि ता माने हमें कोन कहबा ना एयर प्रेजेंस रे एरोजल एयर प्रेजेंस से ताको कोन कहूचे हमें ना एरोजल बोली कहूचे क्लियर हां चलंतु सो एन एरोजल इज अ सस्पेंशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स in an atmosphere gas application include the mist smoke and the smog aerosols influence kohuchandi the air quality and the climate and have significance for many processes both of the environment and industrial utility next mate kohuntu the largest source of pollution in the world is largest source of pollution ame kaha ko kaiba quick largest source of pollution ame kaha ko kahuche world ro ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट को कहूचे जोतिर अधिक मात्रा रे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होउची दैट लीड टू द कोन द होल ऑफ द ओजोन लेयर ताको आपनकर लीड करूची हना नै मते देखंतु यस चलंतु नेक्स्ट सी केमति हे जो जे सी रे कोन अछि सीवेज एंड गार्बेज हमर हे जाउची आसो सो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ pollution worldwide vehicles emit a lot of pollutants include the carbon monoxide oxides nitrogen and particulate matter clear next mate कहंतु oil spills are seen in which ecosystem oil spills आपण माने को इकोसिस्टम रे देखि परिबे oil spills mainly affect with which ecosystem को इकोसिस्टम सहित हमें रिलेट करू छी जल्दी that is desert ecosystem grassland ecosystem forest ecosystem or marine ecosystem को इकोसिस्टम अब ना marine ecosystem सहित हमें रिलेट करेबा next मते कहंतु
the waste management technique that involves the use of microorganisms to remove or neutralize pollutants from contaminated sites is called. From contaminated site ताको हमें कौन कोई परिबा quick contaminated site, the waste management technique that involves the use of microorganisms to remove or neutralize the pollutants ताको हमें कौन कहूचे ना bio remediation बोली हमें ताको कहूचे bio remediation. Then आसा मते को which one of the following weeds is effective in controlling water pollutants caused by industrial influence. तो कौन होगा water pollutants caused by the industrial influence ताको हमें कौन कहबा elephant grass नाई parthenium नाई morgan नाई water hyacinth बोली हमें ताको कहिबा. Option D remove अछि bioremediation ना आसो मते कोन नेक्स्ट वाटर हाइसिंथ बोली हमें ताको कहूचे हाईली इन्वेसिव फ्लोटिंग प्लांट हमें ताको कहूचे क्लियर. नेक्स्ट चलंतु सो वाटर हाइसिंथ हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन क्रिएटेड बाय द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस. मते कोनतु which is a byproduct of sewage treatment and can be decomposed to produce the biogas. कौन हबो कोटा राइट आंसर मते कोनतु which sewage is a byproduct is used for producing the biogas. कौन हबो that is again कहूची ताको हमें sluice बोली कहूचे. Sluice is the end product in solid or liquid state that is recovered from sewage treatment facilities and like other products could be कौन ना cambogram. Next मते कोनतु sewage water is sewage water हमें कहा को कहि परिबा quickly को sewage water is what जल्दी और ताको अपन माने ग्रे वाटर बोली भी कहि परिबे. sewage water is also called as the grey water. Specifically refer kariba household water, that means apanकर water from your kitchen हेजिबो. Toilet हेले अपन मानकर black water हेजिबो. That was the waste water or the black water. Okay, देखो sewage water can be defined the grey water generated from the residential activities such as the dishwashing, food stock preparation or even cleaning माने kitchen सहित related. Again कहूची 4000 माने 3999 होची महापैक प्राइस जोथरे अपन माने जे कोनोसी बैच ऐड करिवे सब आपनकर 2 इयर्स नै कौन इंक्लूडेड हेकी रहिबो. ता सहित आपण माने समर्थ सीरीज नै परिबे सीजीएल मेंस पाई 199 रे ओनली एंड आपण माने मो कोड एसपीजी 10 जदि नउछंती 10% रो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलिबो. हियर इज द हेल्पलाइन नंबर आपण माने कांटेक्ट करि परिबे. नेक्स्ट मते कोंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट एन एयर पोल्यूशन. कहा को हमें कहउचे दिस इज नॉट एन एयर पोल्यूशन. क्विक 70 कौन थिला कोटा थिला रुआ लास्ट को जहा डाउट रहिला को क्वेश्चन टा के कहउछ लास्ट को जीवा डिस्कस करता हला व्यस्त हो एटा फ्लो ब्रेक हबो बोली मु मझी रे रहूनी. अच्छा लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस कहउछ नाइ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट आपनकर लार्जेस्ट हबो. कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा रे आपनकर आसुछ कारण इंडस्ट्रियल सीवेज रे आपनकर बहुत प्रकार फिल्ट्रेशन भी अप्लाई हुए किंतु कार्बन आपनकर ऑटोमोबाइल रे कोनोसी फिल्ट्रेशन नाही. गैस रो जेतेबेले आपनकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहाउची देयर इज नो फिल्ट्रेशन. ओके आसो which of the following is usually not an air pollution. कहा को हमें कहिबा this is not an air pollution. quickly कुह which of the following is usually not an air pollutants पचारिछि कोटा गोटे एयर pollutants नुहा हमको पचारिछि जल्दी जोटा आपनकर ग्रीन हाउस गैस हेतिबो हाइड्रोकार्बन्स कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड एमन को छाडला पर आपन को देखा जाउनी कार्बन डाइऑक्साइड मारिया पई कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज आपनकर कोन ग्रीन हाउस गैसेस ना ग्रीन हाउस गैसेस जे आपनकर ग्लोबल वार्मिंग करूछि आपनकर कोन करछि ना ग्लोबल वार्मिंग एठी पचारिछि एयर पोल्यूटेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर पोल्यूटेंट होनी ग्लोबल वार्मिंग आपनकर होछि नॉन टॉक्सिक कंपाउंड एटमॉस्फेयर जोटा आपनकर पोल्यूटेंट कहउछि ताडा को टॉक्सिक कंपाउंड हेतिया दरकार. कार्बन डाइऑक्साइड एते संख्या रे प्रेजेंट अछि हमें जदी ब्रीदिंग करूछ कोन हमें जीवन पळैबा अपन ना ग्लोबल वार्मिंग आपनकर ए क्रिएट करूछि हैला. It is on climate change related to the reduction of the ozone layer rather than the pollution to the air in the conventional sense. Clear? Next chalandu mate kontu which of the following fuels cause the minimum environmental pollution. कोटा आपनकर minimum environmental pollution सहित रिलेट करूछि आंसर दियो कोटा हबो
नॉट एन एयर पोल्यूटेंट्स अछि हां नॉट एन एयर पोल्यूटेंट्स अछि पा नॉट एन एयर पोल्यूटेंट्स ही अछि आसा कहि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग fuels causes the minimum environmental pollutants सॉरी pollution minimum कहि माने कोन डीजल त करूची केरोसिन कोल करूची किंतु हाइड्रोजन आपनकर हबनी हाइड्रोजन आपनकर हबनी कारण एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन सहित मिक्स हे कि आपनकर हाइड्रोजन थाए तो डेफिनेटली हमें याको रिलेट करेबा नाही क्लियर चलंतु नेक्स्ट मते कहंतु which of the following is the treatment of water pollution कहा को हमें कहउचे this is the treatment of water pollution बोली जल्दी कह which of the following which process is used for water purification और हमें कहउचे वाटर पोल्यूशन सहित जल्दी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन माने वाटर प्यूरिफिकेशन पे गुडा को हमें रिलेट करूचे that means reverse osmosis method रे हमें जाउचे माने कोन कहउचे ना uses a high pressure pump to force the water माने फोर्स करची वाटर को कोदरे ना थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यदि उल्टा हे गला osmosis हला माने हाई लो टू हाई आपनकर रिवर्स हे गला माने हाई टू लो हैला नेक्स्ट चलो so reverse osmosis आपनकर abbreviated the as arrow is the method specifically aimed to treat the polluted water in this system water is filtered through a semi permeable membrane to eliminate any contaminating particles and achieve clean drinking water next mate कहि दियंतु spraying of DDT on crops causes pollution spraying of DDT जते बेले आपन को पचाछि ता माने हमें कोन रिलेट करेबा क्विक spraying of DDT spraying of DDT कहला माने आपण माने कोन रिलेट करेबे जल्दी spraying DDT स्प्रे कले आपण माने कोउठी रे एयर एंड वाटर सहित किछि रिलेशन नाही किंतु हमें कहा सहित जाई परिबा ना सॉइल रे इंपैक्ट पडिबो वाटर सहित एयर सहित पडिबनी क्रॉप एयर सहित एयर जोठी जोठी अछि आपण माने एलिमिनेट करि करि चला हैला सॉइल सहित वाटर कॉम्बिनेशन को चूज करिवे नेक्स्ट मते कोंतु DDT that is the कोन डाइक्लोरो डाइफेनाइल कोन ट्राइक्लोरोइथेन क्रॉस आपण करो क्रॉप रे यूज करा जाय नेक्स्ट मते कोंतु आयरन एंड मैंगनीज आर present as pollutants in water cannot be removed by what कहा द्वारा ये रिमूव हे परिबो नाही मते कोंतु जल्दी पचारि छी कोन आयरन एंड मैंगनीज cannot be removed only by the chlorination ये possible नुहंती only by the chlorination this is not possible it is only a chemical trigger हमें कहि परिबा clear oxidation plus filtration आपनकर हे परिबो ओके नेक्स्ट देखंतु chlorination cannot be used alone as the sole treatment of आपनकर कहा reliable remove iron and manganese while it aids as an oxidant simple chlorination does not consistently precipitate and remove them entirely next मते कोंतु the arsenic problem in India is primarily due to arsenic problem आपन को कहि छि ता माने कोन माने arsenic contamination आपन को कहि छि इन इंडिया कोथि पई आपनकर होउची आर्सेनिक रो आपनकर जदी वाटर सहित रिलेशन हबो ता माने हमें कहि परिबा कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कोल हबनी आपनकर ओवर एक्सप्लॉयटेशन आर्सेनिक हिंटरलैंड रे हबनी आपनकर कास ग्राउंड वाटर सहित हेई परिबो कारण वाटर सहित अफेक्ट करिवो एठी देछि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरफेस वाटर इन द अफेक्टेड एरियाज हबनी आपनकर ग्राउंड वाटर सहित से अफेक्ट करिवो लेटर ऑन जाई कि हम जते बेले पानी पिउचे हम बॉडी भीतर को से जीवो का सहित हबो ओनली जीकेजीएस पई सेमति किछि स्पेसिफिक बैच नाही छा तुमको सब नेला को पड़िबो हैला नेक्स्ट मा देखंतु द ग्रेट स्मोक ऑफ 1952 वाज अ सीवियर एयर पोल्यूशन इवेंट दैट अफेक्टेड द ग्रेट कोन पचारि छ आपनकु कोन पचारि छी को जागा रे कोठी हमें रिलेट करै परिबा ग्रेट आपनकु स्मोक 1952 रो ग्रेट स्मोक जदी पचारला ताहाले आपण माने लंडन सहित रिलेट करै देबे कोन ना लंडन सहित रिलेट करि परिबे दैट ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीवियर कोल्ड weather and the stagnant हमें कोन कहि परियो आपनकर वाइंडलेस कंडीशंस हमें रिलेट करि परिबा टॉक्सिक स्मोक आपनकर आसे डिसेंबर 1952 रे आपनकर हेतिला ओके डिसेंबर 9 1952 रे आपनकर हेतिला नेक्स्ट मते कोंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू देखंतु जेमति दिल्ली रे आपनकर जो स्मोक कंडीशन आसुची ताको हमें फोटोकेमिकल स्मोक कहूचे कारण हमर हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट रे से आसुची जेतु लंडन रे आपनकर क्लाइमेट कोन सब बेले कोल्ड क्लाइमेट तो सेठी आपनकर आसुची ताको हमें कोन कहूचे ना ताको हमें इट रहला ग्रेट स्मोक बोली ना देछ
नेक्स्ट मते कहतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल द्वारा आपनकर कोटा हुई गैस प्रोड्यूस होची जल्दी को राइट आंसर कोन हबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल कोन हबो ना कार्बन मोनोऑक्साइड वेरी गुड गाइस कार्बन मोनोऑक्साइड सहित हमें जीवा तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ gas that comes about from incomplete combustion of fuels when there is not sufficient oxygen to permit the fuel to burn totally carbon monoxide is produced नेक्स्ट मते कोंदु सब्सटेंस इज कंसीडर्ड बायोडिग्रेडेबल कहा को हमें को सब्सटेंस को कहिबा दिस इज कंसीडर्ड एज द बायोडिग्रेडेबल जल्दी among these हमें कहा को बायोडिग्रेडेबल बोली कहिबा ना दोस can be degraded by the biological process सेमानको हमें बायोडिग्रेडेबल ही कहिबा relies entirely on the living organisms such as the bacteria and fungi they can degrade those next कोंदु मते कोंदु what is the pH of rainwater during the acid rain time रे आपनकर रेन वाटर pH केते थिबो obviously आपनकर कोन ना कम ही थिबो माने आपनकर कोन less than 5.6 थिबो pH आपनकर approximately के 5.6 due to the dissolved कोन कार्बन डाइऑक्साइड आपनकर डिसॉल्व होई कि रही एसिड रेन दैट्स व्हाई आपनकर pH लेवल कम रहिबो रेन रे मस्ट ड्रॉप बिलो द थ्रेशोल्ड आपनकर क्लासिफाइड हेची कोउथिरे ना आपनकर एंथ्रोपोजेनिकली एसिड रेन ता आपनकर नेचुरल एसिड रेन हुएनी तो एसिड रेन हैज अ pH less than 5.6 with values ranging from 4 to 5.6 depending on the quantity मते कोन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा को हमें कंसीडर करूछे दिस इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोल क्विक which of the following is considered as the non biodegradable waste को कौन हबो that is option B सहित जाउछो त माने काहू ना प्लास्टिक सहित जाउछो वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते कोन द यूनाइटेड नेशंस ग्रीन क्लाइमेट फंड is headquartered in which country united nation ro green climate fund आपन करो यार हेडक्वार्टर को कंट्री रे अछि के मते कहि परिबो जल्दी आसो त माने UNFCCC ट्रिपल सी हला कोन आसुची ना द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आर फंड माने आपन करो टोटल फंडिंग करछि UNFCCC ताकू एंड एटा आपन करो कोठी अछि ना साउथ कोरिया रे वेरी गुड गाइस साउथ कोरिया रे आपन करिए प्रेजेंट अछि Next mother the United Nations Green Climate Fund headquartered in the South Korea. It is the Songdo and it is founded in 2010 and the funding ke kochi UNFCCC. मते कोन which of the following is not a greenhouse gas या भितरु कोटा आपन करो गोटे greenhouse gas नुह मते कोन which is not a greenhouse gas कोटा गोटे greenhouse gas नुह helium नुह this is the inert gas हमें कहि परिबा और this is हमें noble gas बोली ताको हमें कहि परिबा helium neon argon krypton xenon radon okay next चलंतु मते कोंतु in which year special climate change fund was established the special climate change fund आपन को establish हेतिला माने कोन ए जो UNFCCC ता माने केबे हेतिला ना 2001 रे आपन करिए फॉर्म हेतिला को सेशन रे ना COP7 सेशन रे COP7 कॉन्फ्रेंस रे आपन करटा एस्टैब्लिश हेतिला कोठी ना मरक्के रे हेतिला आपन करटा हला yes 2001 रे हेतिला चलो so special climate change fund was established in 2001 in the conference of the parties COP7 रे हेतिला and it was a financial support to developing the countries for project that address the climate change मते कोन नेक्स्ट व्हाट डज द आपन कर एब्रिविएशन UNFCCC stand for ए जो UNFCCC कहूची this is stand for what एबे कहूची the United Nations framework convention on climate change that means आपनकर कोठी ऑप्शन सी रे अछि वेरी गुड गाइस चलो तो नेक्स्ट मते कोंतु which of the following greenhouse gas has the greatest heat trapping ability को गैस पाखरे आपनकर हीट ट्रैपिंग एबिलिटी अधिक अछि के मते कहि परिबो क्विक कोन हबो ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन कोठु बाहर अछि ना आपनकर जो ग्लोबल
आपणकर वार्मिंग पोटेंशियल अच्छी GWP अच्छी आपणकर प्रूफ करछि देयर इज अ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स हायर दैन अदर कार्बन डाइऑक्साइड हैला यदि 100 इयर्स आपणकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहरुछि सेति के स्केल आपणकर पोल्यूटेंट क्रिएट करबो जेति के आपणकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स करूछि ओके नेक्स्ट चलंतु मते कहंतु द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इज फोटोकेमिकल स्मॉग रो मेन कंपोनेंट आपणकर कोन रहइबो क्विक फोटोकेमिकल स्मॉग आपणकर कोठी देखा जाउची ना दिल्ली रे देखा जाउची आपणकर कोन फोटोकेमिकल स्मॉग ताहाले मते कहंतु जे स्मॉग रहउची एथिरे आपणकर कोन रहउची ना ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कोन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हमें ताकू कहउचे वाटर वेपर आपणकर रहिबो सल्फर डाइऑक्साइड रहिबो ऑल ऑफ द एबव को आपण माने पढुचंती ऑल ऑफ द एबव ता तुमको देखा गला एठी कमेंट ऑप्शन देखि मार दोचो नाम नबो आसो so photochemical smog is a type of air pollution formed when sunlight react with the nitrogen oxides and the volatile organic compounds in the atmosphere primarily pollutants nitrogen oxides with relate करेबा हैला क्लियर चलो नेक्स्ट मते कोन द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू ए जो अल्फा डाइवर्सिटी कहूची ता माने कोन अल्फा डाइवर्सिटी कहूची ता माने कोन बुझुची जेनेटिक डाइवर्सिटी कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और स्पेसीज डाइवर्सिटी अल्फा पर्सन माने कोन सिंगल दैट इज कांसेप्ट कोन अछि ना आर एस विटाकर ताको आनी थिले स्पेसिफिकली मेजर्स करिवो लोकल स्पेसीज मानकू तांकर रिचनेस तांकर इवननेस को विथ अ सिंगल यूनिफॉर्म कम्युनिटी और द इकोसिस्टम को हैला तो अल्फा डाइवर्सिटी डिस्क्राइब्स द richness and evenness of species within a particular local areas of ecosystem. It essentially measures how many different species are present in a single site. Next mate कहंतु the ecological pyramid that is always upright. The ecological pyramid that is always upright ताको हमें कौन कहूचे जोटा कि सब बेले आपनकर आगु ऊपर को जाउछि सेटा होछि पिरामिड ऑफ एनर्जी ताको हमें कोन कहूचे ना 10% लॉ अकॉर्डिंग 10% लॉ आपनकर के देथिले लाइनमैन देथिले तो अकॉर्डिंग टू द लाइनमैन्स 10% लॉ द 10% लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स energy is essentially lost as a metabolic heat at each sensitive tropic setup or the tropic step of the level or the in the food chain तो एटा को लाइनमैन देथिले मन रखंतो पिरामिड ऑफ एनर्जी बोली हमें ताको कहूचे क्लियर एते कि जिंसा नेक्स्ट चलंतु so energy flow according to the 10% law of thermodynamics energy is lost as heat at its tropic level मते कहंतु which of the following are important biotic factors that can affect the structural and organization of biological communities कोन हबो मते किए कहिबो क्विक कोन हबो एठी एठी पचाछि which of the following are important biotic factors which of the following आपनकर important biotic factors कोन हबो मते कुओ that is the predation competition disease etc because we know biotic refers strictly to the living or biological interaction जे कि self provide करिबा how animal and plant communities function करंती okay next चलंतु so ecological factors that influence an ecosystem are divided into two categories गोटे biotic factor गोटे abiotic factor biotic रे living abiotic रे non living are categorized next मते कहंतु all of the following statements about ecology are correct except ecology को नै कि आपनकर सब statement आपनको ठीक लागिवो किंतु गोटे इथरे फुल सेंटेंस देछि ता माने हम कहा को रिलेट करिया पढि चला ना ecology is the study of the interaction between biotic and abiotic aspects of the environment ठीक अछि ecology is a discipline that is independent from natural selection and evolutionary history एटा कोठी हबो मते कोन इकोलॉजिकली आपन को जति कहबा इकोलॉजिकल इंटरैक्शन एक्टिवली ड्राइव करूची नेचुरल सिलेक्शन को नेकी and the evolutionary histories को जे कि सेप अप करूची करंट स्पीशीज नीचे को नेकी ताले एटा तो भूल हे गला ना ऑप्शन बी भूल हे गला इनकरेक्ट बिकॉज़ इकोलॉजी इज डीपली आपनकर का से इंटरवाइंड अछि विथ नेचुरल का से ना सिलेक्शन एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सहित नेक्स्ट कहि दियो डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम डेट्रिटस फूड चेन कहूची माने ये आपनकर स्टार्ट करिवो कहाटू माने को भितरे जल्दी डेट्रिटस माने स्टार्टिंग तो मानु कहिची डेड सहित डेट्री डी फॉर detritus that means the dead organic matter this is the correct thing the detritus who bypassing the living producers तो राइट आंसर हमें डेड ऑर्गेनिक मैटर सहित रिलेट करेबा
Next, चलो detritus food chain begins with the dead organic matter such as the fallen leaves, animal remains. The material is broken down by the decomposers and the detrivores. Next, मते कहंतु what does the board 5 or the BOD 5 refers to? ये जो BOD 5 कहूची ता माने कौन? B for biological, O for oxygen, D for demand, then 5 आसीगला. ता माने कौन हमें कहि परिबा कि biological oxygen demand in 5 days. That means कौन कहि परिबा ना ये रिप्रेजेंट करूची द स्टैंडर्ड ग्लोबल लैबोरेटरी जोटा को आपनकर कौन कहूचे ना यूज करूची मेजर करूची वेस्ट वाटर कंटामिनेशन को बाय ट्रैकिंग द डिसॉल्व ऑक्सीजन डिप्लीशन माने गोटे वेस्ट वाटर रे आपनकर केति की डिसॉल्व ऑक्सीजन रहूची 5 दिन जाए आपनकर ताको स्टडी करा जीव रखी की गोटे माने कोन गोटे कंटेनर रे रखी की ताको 5 डेज जाए 20 डिग्री सेल्सियस लिखा है बड़ी देखो 5 days जाए लिखा है नीचे देखि दम 20 डिग्री सेल्सियस रे टिल 5 डेज आपनकर कोन ना रिसर्च करा जीव कि केति की डिसॉल्व ऑक्सीजन ता भीतरे रहूची विथ द वेस्ट वाटर ओके दैट इज द बीओडी नेक्स्ट मते कोंदु which of the following is used as a bio indicator of air pollution कहा को हमें कहूचे this is a bio indicator of air pollution की कहि परिबो बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन हमें कहा को कहूचे कहितिले एबे त मानकू ना लाइकेंस को हमें कहूचे लाइकेंस मानकू कहूचे बिकॉज़ दे आर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स जो माने एब्जॉर्ब करंती एयर बोर्न वाटर मानकू एंड द न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली दैट्स व्हाई हमें कहा को लाइकेंस को रिलेट करूचे लाइकेंस आर यूज्ड इन द बायो indicators of air pollution. A lichen is a composite organism that arises from the mutualistic. Okay. Next, according to the Ramsar Convention, which of the following is World Wetlands Day? World Wetland Day हमें को दिन को celebrate करूचे किए कहि परिबो February 2 रे आपणकर एवरी इयर 1971 रामसर ईरान रो गोटे शहर नाम रामसर सेठु आपणकर कंजर्वेशन स्टार्ट हेथिला दो आमे जानिछे याकू कोन आमे कहूचे ना दैट इज द वेटलैंड डे बोली सेलिब्रेट करा जाउची फेब्रुआरी 2 रे क्लियर देखि दियंतु सो वेटलैंड डे फेब्रुआरी 2 marks the anniversary of the Ramsar Convention on Wetland. It was adopted in February 2 1971 रे आपणकर कोन ना ये अडॉप्ट करा जाइथिला ओके क्लियर अच्छा मते कहला जो 15 जनवरी आपणकर अछि याकू हमें आर्मी डे बोली जानिछे की याकू हमें इंडियन आर्मी डे बोली मन रखिछे यूनाइट आपणकर हां आर्मी डे बोली 15 जनवरी हां ठीक अछि हां तो यस 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 चलो सो अगेन कहूची 3999 देके आपण माने महात्याग नहीं परिबे एथिरे सब बैच अनुशासन हेला अग्निपथ हेला स्पंदन सहकारी जे कोनोसी बैच आपण नेबाकू चाहछंदी या फिर अपकमिंग जे कोनोसी न्यू वैकेंसी आसीबो सेटा आपण माने महात्याग सहित कवर अप करि परिबे एंड ई महात्याग रे आपण माने जदी मो कोड एसपीजी 10 यूज करूछंती ताहाले गोटे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पाइबे स्किल टेस्ट पई सीजीएल मेंस पई आपण माने 199 देतेबे एंड पेड क्लास रो स्ट्रक्चर होउची 200 माने आवर माने 200 क्लासेस रहउची नंबर ऑफ क्लासेस एंड 3000 प्लस एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज प्लस लाइव डिस्कशन आपनकर प्रोवाइडेड अछि मो गाइडेंस से अंडर रे जिबाकू चाहउचंदी एसपीजी 10 आपन माने कोड यूज करिवे 10% रो एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोनोसी बैच नेबाकू चाहउचंदी कुथरे क्वेरीज अछि एनीथिंग यू कैन आस्क मी हियर इन ऑन व्हाट्सएप ओनली 9124730510 else 82805 32825 ऑफिस नंबर ताको भी कॉल करि पारिबे ओके बाकी रहिला क्लास रो पीडीएफ आपण माने वेदांत क्लासेस को स्कैन करि दियंतु टेलीग्राम चैनल को एंड आपण माने जॉइन करि परिबे वेदांत क्लासेस रो टेलीग्राम चैनल सो दैट आपण माने टू पीडीएफ भी पाइ परिबे ठीक अछि कॉल कले रिचार्ज खत्म कहूची लागुनी मु तो कहिछि आपण मानकू कि एडा मोर व्हाट्सएप नंबर कॉल करिवे नाही तो कॉल करूछ कोथिबे तम माने आज आउ के कॉल करनी आज मु मेंटली फिजिकली पूरा टायर्ड हे सारची अबे खाली सोई खाइबिनी भी आज किछि खाली सोईबार अछि मते चलो थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच जो माने लेटर ऑन पीडीएफ माने रिकॉर्डिंग देखिबे सब्सक्राइब करिनेबे चैनल को
And again, coach, thank you so much. Have a good day. Take care of yourself. But first of all, do prioritize your parents. This would be your first priority. No one else in the world. Thank you so much. କିଛି ଖାଇବିନି ଆଜି ଖାଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭୁସି ବତୁରେଇଛି କାଲି ରାତିରୁ ତାକୁ ପିଇବି ଶୋଇବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ. I need rest. चलो, thank you guys. Thank you so much. Have a good day guys. ଟିକେ ଜल्दी କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା ବିକଜ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ସ୍ପିଡ୍ କହିଲେ ବୁଝିବାକୁ ଆପଣ ମାନେ ନାରାଜ ସେଥିଲାଗି. ଓକେ.